Hello. Yeah, hi guys. We'll start in 2 minutes. Waiting for more to join. And yeah, good evening. Hi. Yeah, sorry guys. Yes, okay. So what's happening? Let me just read the chat once. Let me do. Today's topic is going to be tree. Okay, we are going to learn tree. Okay, and please doubts after break would be better. Okay, cool.
Okay, I'll just we'll just do that thing. We'll just swap that thing today and see. I understand, Ajay, but that was the same thing before. Like even before this 3 hour model got started, it used to be that we used to have 1 hour of doubts discussion and then 2 hours of lectures. Okay, if you had attended it properly, you will be noticing that it's the same level of exhaustion. It is just that now you're forced to attend it. Okay, you might be feeling a little kind of that. Okay, so we'll see, guys. Okay, we'll see what we can do. Okay. So what I'll do is I'll discuss the class today. Okay, I'll discuss the class today, and after the break, okay, when we come back, okay, we can solve the questions. Okay, so we can solve the question of like the questions that were pending. Okay, uh, we can do the thing. We can watch the not watch. I mean to say we can do a thing, guys. We can like I was planning to do the questions that were pending, like smallest window or your prefix XOR wala kuch scene thi, right? So prefix or pairwise XOR. So these questions I'll be discussing. I thought I'll be discussing the doubts. Okay. So I'll be doing that after the break. Okay. After the break, we can just do it. Yeah, sure. After the break, I'll take up the questions and do attend that. Okay. It's not be like you guys will be leaving the class just because I'm not going to discuss any class. Okay, do attend that. Okay, I'm letting you guys do it because you guys, I'm trusting you. Okay, so anything else before we start? Anything else, guys? We can see some chat. Let me just see. So I figured out. Oh, I'm not sharing my screen. Okay, sorry. Let me do that. Yes, after breaks we'll take up the doubts. Okay, not the doubts. I will be doing the assignment questions. Okay, it's not doubts, right? The questions like longest subsequence and the smallest string which is satisfying it. Okay, so okay, let's see. Let me just look at the chat. So guys, you can just message me, I guess, right? You can message me directly. Okay, but I don't think you can message to everyone. Try messaging me first. I'll just confirm if I'm receiving the message or not. Are you guys able to message me? If no, raise your hand. Let me see. Okay, cool. Got it. You are not able to message. Okay. So is my screen visible? Hello? Yes, great. So let me just start with today's class. Today we'll be discussing after the break. Okay, after the break, we'll be discussing the doubts I'll store and do attend that thing. Okay, I should not be finding that 5-10 लोग है बस doubts discuss करने के लिए. So that will be a bad thing to see. ठीक है, चलो, let's get started. I'm sorry. So let's get started with the class. So let me just put my pad here and okay, great. Okay, I'm ready. So yeah, so guys, we are going to learn the new topic called trees. Okay. So what's today's date? Today's date is 18th October, if I'm not wrong. Where is today's date? 19th. Okay, cool. So we are going to start a new topic. Okay. So what you learn in module 3? Okay, you learn hashing. Great technique.
to summarize it, it is just using of big of n space to store something. Don't annotate on my screen, please. Yeah. So it is a technique which uses big of n space, but to constantly, in constant time, to access any element, right? That is how that is what hashing is, right? So using this, we are able to write an efficient type of algorithms, right? And then we learned a couple of other things like two pointers approaches, right? Like two pointers, we have formalized what are two pointers approaches. We have learned sliding windows. Okay, so these guys are kind of doing the n square approaches to big of n, correct? Uske baad you learned bit manipulation, like hashing. Sorry, we learned queues as well. The queues, we'll be revising the queues today again. Okay, then we learned bit manipulation, right? So you realized how deep you can go and do the things in big of one time at times, right? So you guys remember how we are looking at every number as a series of zeros and ones, right? And how you are performing the operations in it such that it is giving some timely advantage to us, correct? So that is what bit manipulation is, and it is great, right? You are able to learn that. Okay, and like if you see, all the algorithms are aiming towards reducing that time complexity, might be increasing a little bit of space complexity in terms of hashing. Okay, but at every point you are able to write the things in a much faster way, right? So you're talking about the algorithms. We learned a lot of algorithms in this particular module, right? One is hash map, is the one of the data structure. Now we're going to learn one more data structure, that is trees, right? So I figured out, like I found out very beautiful articles for you. Okay, and guys, let me tell you. Okay, so like before starting any particular topic, okay, I'm searching good articles. Like there are millions of articles available on the internet. Like बहुत सारे websites का बहुत सारे articles है एक ही चीज को describe करते हुए. But I'm just finding whichever is more informative for you guys, so that तुम एक बार पढ़ के, मतलब beginner के level में पढ़ के तुम समझ सको उसको, है ना? तो वैसे वैसे आर्टिकल्स को मैं पिक कर रहा हूँ, चेरी पिक करके आई एम पुटिंग इट इन द Discord. I mean, not in the Discord. I mean, in the chat. I mean, in the notes. If you had ever observed, ठीक है? तो I'm not sure कि कितना लोग पढ़ रहे हो ये सब चीजें, बट आई एम पुटिंग इट, ठीक है? तो एक बार देखना वो सब, ठीक है? टाइम मिले तो पढ़ लेना, ठीक है? लेट मी जस्ट, तो देखो कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, देन you will be finding a link that is kind of doing it. For example, कल का ही देख लो, कल only I put something else, ठीक है? यहाँ पे you can see prefix sum implementation, ठीक है? What is prefix sum and all, right? And in such way I'm putting some articles, ठीक है? Do read them, ठीक है? So like reading those articles, like you can see what are array list, what is list, right? I put articles like that, okay? So when you find time, read these things, okay? For example, I told you, like from W3, I've put hash map kya hota hai, hash set kya hota hai, right? And वापस from programs also, from hash map kya hota hai, right? In that way, I put such things, okay? Do read them, okay? They will be really helping you. मतलब that is the only thing that will be putting you one step ahead than what's going on. यहाँ पे देखो, I've given what is unsigned int ka Java ka. Like if you open this, yesterday I opened this, right? So you'll be seeing how exactly, like you can see यहाँ पे GFG ka bitwise, all about bitwise manipulation, right? If you copy paste this, you'll be seeing what about bitwise manipulation. You'll be seeing about bitwise operators, right? So ऐसे जो links है, इसको पढ़ना अच्छी तरह से. जैसे यहाँ पे you will be realizing how int में कैसे save होता है, उसका value usually bits में कैसे दिखता है, और you can see that ये 1 होते ही this should be this number, but it will become minus of that number because उसका 2's complement same होता है इसका, right? So they'll just show you, and it is a better representation, right? Because I can't represent 32 bits every time, right? And I'm not sure I'll be always remembering such values, correct? So see this. Take a read such things. These are the things that are more helpful to you. Okay. So जैसे कि GFG का all about binary manipulation, that is a great article. In the similar way, I have figured out few articles for the binary tree as well, which I'm going to put in the chat in this notes. Do read them, okay? After you leave the class. I know that it is exhausting. I know everything, okay?
but do as much as you can. ठीक है, that is the advice I'm giving. I'm not saying कि करना ही है, ठीक है, do your best, जितना तुम लोग कर पा रहे हो, ठीक है, जितना टाइम परमिट कर रहा है, पुश करो खुद को, और जितना ऊपर उतना करो, ठीक है, जितना ऊपर उतना करना इज ऑल्सो बहुत कुछ करना, राइट? So it's not like you should be putting a target every day and you need to doing it. You definitely will be having a target. लेकिन target का तुम 70% ही हो पाए ना, even then that is fine, because that is your best on that day. क्योंकि काफी सारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, तुम टायर्ड हो सकते हो, ऑफिस में ज्यादा काम हो सकता है, या कहीं घर में कुछ लाइक घर में कुछ काम होगा which you need to attend some function or whatever, right? You're not able to reach your 100% of the goal. Sometimes 30% ही हो पाएगा, but किसी दिन 0% होने मत देना, बस do your best on that day. That is what I suggest. Like in the chat कोई बोला था कि 2 घंटे क्लास, उसके बाद 1 घंटा, फिर उसके बाद कैसे हो पाएगा? मतलब उसके आगे तुम्हारा स्टेमिना के हिसाब से जितना ऊपर उतना करो ब्रो, ठीक है? Because लेकिन even at some point I was also a student, right? Like you guys, ठीक है? Even I did like that's by experience I'm saying कि कभी भी 100% reach नहीं होता, 100% ideal case में reach होता है. We are all human beings, ठीक है? कभी कभी हो जाता है गलती, कभी कोई 10% भी होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ ना कुछ होना चाहिए. यहाँ पे 10% हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, कभी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, राइट? सो डू दैट थिंग, ठीक है. विद दैट विल स्टार्ट आवर ट्रीज. यू हैव एम्पल ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इफ यू एक बार सर्च करो आर्टिकल्स के बारे में, तुम्हें इतने सारे वेब पेजेस मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे, राइट? तो वो सबको पढ़ने के लिए, लाइक रिसर्च करने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई एम पुटिंग इट हियर. इनको पढ़ लो. इफ यू फील दैट और पढ़ना चाहिए तो और पढ़ लेना, ठीक है? इज दैट कूल गाइस? I think I have an article. Just a second. Programs. I think it, we have some article based on trees, which I didn't pick up this time. Okay, which I'll just find out, and I'll like in the break I'll find out if possible, if I have some time. Okay, and we can do that there. Okay, is the recording on? Recording chal rahi hai. Okay. I'm not sure कि कौन सा है. Not race. I'm not sure where is it. I'll find it out. I'll find that article, and it is necessary for you guys to have that article. Okay, so let's get started. Okay, so you guys are going to learn trees. Okay, so there's another PDF which I'm going to put. Okay, ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी पढ़ना, ठीक है. So like I'll send this thing as well. ठीक है. So it sells the same thing which we know from years, right? What is a data structure? Haha, हमें तो पता भी नहीं, right? What is a data structure? It is an organization or format of storing or managing the data, right? So tree is a type of data structure, ठीक है. So कैसे डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब अब इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास. लिंक लिस्ट है, क्यूज है, स्टैक्स है, राइट, arrays hai, and all these things are storing your data and managing it, right? Why do we need another type of data? Even hash map is a data structure, right? Here's a chat, yeah, ठीक है. chat को थोड़ा don't spam, ठीक है, just put the necessary things. So why do we need a data structure, one more data structure, right? So तुम देख सकते हो like in hash map, right? In the hash map you realize that there are certain real life problems which need a data type like hash map, right? At times one value will be mapping to other value, right? It could be roll number, it could be marks or something, right? So this is a very practical application that you have in the real life world, right? In a similar way, trees come into the picture when there is hierarchical data. Hierarchical data मतलब अगर तुम्हें 5th क्लास में अगर बोला गया कोई, ठीक है, so if you say, if they ask can you draw your family tree, तो तुम बना सकते हो ऐसे ऐसे. मैं तो ऐसे बनाता था, like you have grandfather and GF मतलब grandfather, ठीक है, and then you have grandmother, ठीक है. ठीक है, so you will be having like grandfather and grandmother has 5 children, ठीक है, like, and in 5 children का like this is your papa P,
and this is P0, that is your papa 0, मतलब बड़ा पापा, उसके बाद P1 is छोटा पापा and P2, right? So in that way you have 5 P3s, and then you have girls as well, right? So but for papa, you have papa has 2 childs, okay? One is you and your sister or brother, whatever, right? And and then whatever these people are, they are your cousins, right? So all of these people are called cousins, right? So they are not completely related to you. This person is most closest to you because he's directly coming from your father, right? So such type of data कैसे store करेंगे? इसके लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, करेक्ट, राइट? सो इसके लिए और बताओ ऐसे क्या क्या डेटा हो सकता है, जैसे कि लाइक सी ड्राइव है हमारे पास, ठीक है? इफ यू नो व्हाट इज सी ड्राइव और डी ड्राइव जो भी है, राइट? इफ यू नो, उस ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, राइट? ये एक फोल्डर हो गया, इस फोल्डर, ये एक और फोल्डर हो गया, इस फोल्डर में लाइक यू माइट हैव सम स्टडी मटेरियल, राइट? यू माइट हैव सम मूवीज हियर, राइट? यू माइट हैव सम समथिंग एल्स, राइट? हाँ, folder inside a folder. फिर last में you will be having files, correct? So like this is another type of data to store this, right? Don't you think trees have been implemented here? So this is exactly what trees are. ठीक है? Trees are used to store hierarchical data, right? मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, that way, right? I'll tell you, food chain of animals, correct? Someone said food chain of animals, right? Mammals होते हैं सबसे ऊपर. No, sorry, अब मुझे नहीं पता यार, ये थोड़ा बायोलॉजी हो गया. तो लाइक उसके नीचे लाइक हर्बीवोरस हो सकता है, लाइक दिस गाय विल ईट ऑल ऑफ देम, दिस गाय विल बी ईटिंग अनदर वन, ऐसे से होता है ना, राइट? हाँ, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? सो ये होता है ट्रीज, ठीक है? तो मैं दिखाता हूँ तुम लोग को प्रॉपरली, ठीक है? सो बेसिकली यू विल बी हैव, यू नो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? concrete realization of abstract data type, you can just skip such fancy words for now. And it says that always a trade-off, some operations are more efficient, some are less for any data type, correct? तो तुमको डिसाइड करना होगा, राइट? लाइक हम मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमको इधर ये चूज करना होगा या वो चूज करना होगा, इधर कभी कभी टाइम चूज करना होगा, कभी स्पेस यूज करना होगा, ठीक है? तो अब बताओ गाइस, अगर मैं लिंक लिस्ट यूज करूंगा किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, what is that thing which I'm compromising for? अगर ऐसे कुछ सर्च किया, ऐसे कुछ नंबर्स रखा मैंने, अब देखो लिंक लिस्ट का डायनेमिक स्पेस वाला बेनिफिट है, बट व्हाट इज द थिंग दैट आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर? कैन एनीवन टेल मी? हाँ, के नोड एक्सेस, करेक्ट? नहीं, नॉट स्पेस, द एक्सेसिंग एनी नोड इन कांस्टेंट टाइम, ठीक है? दैट इज नॉट देयर इन लिंक लिस्ट, राइट? वो एरेस में होता था, एरेस में तुम फर्स्ट इंडेक्स पे तुरंत जा सकते हो, थर्ड इंडेक्स पे तुरंत जा सकते हो, इसमें पूरा ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, राइट? लेकिन सोचो, ये एक रीजन है जिसके वजह से यू कैन रिजेक्ट लिंक लिस्ट, बट सोचो ये रीजन तुम्हारे लिए रीजन है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसे रैंडमली कभी एक्सेस करना ही नहीं है, तुम्हें सीक्वेंशियली ही एक्सेस करना है, सीक्वेंशियली एक के बाद एक एक्सेस करते जाओ, राइट? एंड बस वही हमारे यूज केस. देन डोंट यू थिंक लिंक लिस्ट इज द बेस्ट थिंग टू टेक फॉर गाइस? है कि नहीं? हाँ, ओके श्योर, ओके श्योर, विल कंटिन्यू इन इंग्लिश, ठीक है? At some point only I'm just repeating it in the Hindi, I'm not completely teaching anything in Hindi, okay? So mind that. And yeah, for example, if you have a use case where, if you have a use case where you are just, you just need to traverse it by one, ठीक है? उस केस में तो तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है कि नहीं? एरे की जरूरत ही नहीं है, राइट? उसके लिए तुम्हें लिंक लिस्ट की जरूरत है, करेक्ट? करेक्ट? तो वही, इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड ऑफ, ठीक है? कभी कभी कुछ और, कभी कभी कुछ और, ठीक है? बेस्ड ऑन वट एवर यू वांट, ठीक है? सो मैन, आई वांट टू ओपन दिस इन, यार क्या है ये, आई वांट टू ओपन दिस इन क्रोम, इट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर मी. ओके, ब्रेक में देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है? सो लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग, ठीक है? एरे देखो, यहाँ पे एरे में वैल्यू ऐड करने के लिए इट इज टेक बिग ऑफ एन टाइम, करेक्ट? क्योंकि हर वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा. लेकिन टू गेट अ वैल्यू इट इज वेरी फास्ट, एंड टू सर्च फॉर अ वैल्यू इट इज again big of n, right? So like in linked list mein, to add a value it is very easy, right?
and to get a value that is very difficult, but contain करने के लिए even then it is big of it, right? So it's all about that. It's about the trade-off. Okay. So this shows how our link tree looks like. Okay. For example, if you have a linked list where the link one after the, so this is called a node, right? You know what is a node, and this is called a pointer. This is referring to another node. This is referring to another node. This is referring to another node, right? So in that way it is happening. Okay. The same way trees may, I told you, right, it is in a hierarchical data type, right? So one person might refer to multiple nodes. Okay. So यहाँ पे only one value will be referring to only one value, right? Because there's only one pointer. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला. यहाँ पे देखो तीन values को भी refer कर दिया, right? So the reason why they call it as tree is, देखो trees कैसे दिखते हैं, right? You have something called root, उसके बाद you have stems, and then you have branches, right? And these are the leaves, right? These are the leaves, correct? Are you guys seeing how one value will be expanding into many values? जैसे हमारा grandfather से like बहुत सारे बच्चे होंगे, उसका उसका बच्चे होंगे, ऐसे ऐसे. Are you guys getting what I'm saying, right? So this is the D data structure, but in CS we put it upside down because we believe that root is more important than all the other things, right? So that is what they are storing here. Okay. And let me move forward, and now you'll be understanding what are trees. Okay. Wait, guys. Drag and drop, right click, open with braces. वो सब तो कर सकता हूँ यार, but like I need to search where this guy is present. And also I need to search for that good article actually. Okay, we'll see this after the break. I'll take 5-minute break and fix all these issues. Okay. See, what is a tree data type? यहाँ पे clearly लिखा है data structure with nodes similar to linked list, as I told you, but each node may have 0 or more successors. Successor का मतलब, now I'll be teaching you what is the terminology of trees. ठीक है, ध्यान से देखना, get yourself some notes. ठीक है, because note करना जरूरी है trees के लिए. ठीक है, so I'll give you 2 minutes. I'll drop this article, no worries. This is a PDF actually. I'll drop this PDF. Don't worry, but get yourself some notes. Do you guys want some time to get your notes? ठीक है. Okay, cool. So let me just continue and let me just see how I should be doing it, right? So see, the trees के बारे में they are explaining, right? So each node may have 0 or more successors. There is a new word that we are getting, that is successors. ठीक है, successors का क्या है, मतलब क्या है? जैसे मैं तुम लोग को बताया था, successors are the people, like are the childrens. ठीक है, मतलब from this generation whatever that emits, they are called successors, right? predecessor मतलब previous generation का बच्चे, right? So but successors मतलब the bottom people, right? The bottom people. Even this guy is a successor, right? So that is what they have shown. Each node, just like linked list का node होता है ना, but one node is connected to one node only. But here, one node will be connected to many nodes. But there are other constraints as well, which I will be telling you. Okay. The other constraints is each node has exactly one predecessor. This is the most important thing, right? Except the root, which is none. So root is this particular, the first node that using which you can go to each and every node. देखो मैं 8 पे जाना चाहता हूँ, मैं रूट से जा सकता हूँ, यस. मैं 7 पे जाना चाहता हूँ, आई कैन गो. मैं 4 पे जाना चाहता हूँ, आई कैन गो. मैं 2 पे जाना चाहता हूँ, आई कैन गो. मैं 9 पे जाना चाहता हूँ, आई कैन गो, राइट? So root is like head of the linked list, right? So if you are given, if I give you an head का reference दूंगा, ठीक है, can you traverse to any of the node, guys? Can you go to any of the node, or can you identify a linked list just by using one node? Correct, right? Similarly, you have something called root. Root का मतलब है like it's like literally जो trees का roots होता है उससे पूरा सब कुछ निकलता है ना. All the trees will be going out, right? Similar concept है.
a root is a node that will be identifying the whole tree. If I give you a root, you can identify a tree. Is that cool? Guys, is this making sense? Right. So they say that every node has exactly one parent, predecessor, मतलब parent समझ लो, है ना? Except the root which has none, right? So so this guy root has no parent, but यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि this guy has another parent, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता. That is not a tree, ठीक है? Tree में strictly every guy has only one parent, ठीक है? That is the important point. All roots are reachable from the root. I'd already told you this thing, okay? So just see, this is a perfect, this is a tree that is good, correct? Then comes this particular tree. You can see that which rule it is violating, rule number 1 or rule number 2 or rule number 3. Which rule is this particular data type violating? Rule number 3, right? It's not 2, okay? I mean, 2 bhi ho sakta hai, but all nodes are reachable from the root. See, if you consider this as a root, then you can't reach to any of these things. If you consider this as a root, then you can't reach any of this. And also 2 is also violated because this guy has no parent. If we consider this as a root, then this guy has no parent. Correct? Is this making sense, guys? Right? So so this thing could be called as, this is one tree and this is another tree. So do tree hai na, this thing as a whole is called as forest. Yes, Mohammed Shabin. इसको फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है? 2-3 ट्री दे दिया ना. This whole thing is not called as a tree. This thing is called a tree. This thing is also called a tree, but this whole thing is not a tree. It's a forest. ठीक है? Set of trees is called forest. ठीक है? So let's move forward. तुम यहाँ पे देख सकते हो. This guy is violating the first rule. This guy is having 2 parents, right? So this is not. And what do you think? Is this a tree or not? Yes, it is a tree because it is not violating any of the property. Every node is having only one, and every node can be reached by the root. Making sense, guys? So let's move forward. These are just the terminologies. ठीक है? नोट कर लेना कहीं proper जगह. ठीक है? ठीक है? So this guy is a root of the tree, right? So what happens is this guy won't have any parent, but this is like an identifying thing of the whole tree. Okay? And this person is a child. Like whenever from one node there's another node coming, that is called as child, and this is called as parent, right? So W is child of M, and M is parent of W. Is that cool, guys? Making sense? Keep noting this now. Okay? In the same way, like D is called successor, of M. Successor मतलब whoever is coming under its tree. ठीक है? तो M का successor है, मतलब he's a grandchild है ना. So this guy is a child and this guy is his child, right? So he can be called as child of G, but he should be called as successor of M because he is coming from M. He's a successor of M. Predecessor मतलब उसका पहले वाला, पहले जनरेशन का बंदा है, उसका पापा हो सकता है, उसका like दादा हो सकता है, and all those things. Are you guys getting it? Any doubts? And similarly, there's another thing called leaves. Okay? Leaves are the nodes which has no children. You can see that leaves have no children, right? So at the end, if you look at the tree in this way, okay, you have the root, you have branch, then you have, you have the main branch, and then you have many branches, and leaves has no further division, right? In a similar way, leaves are the nodes which don't have any children. So these are called leaves. Can we say B is a successor of M? B is a successor of M. Correct.
Dharmendra, you can call B as a successor of M. Full. Okay. Successor matlab, like all these guys are successor of M. Okay. You can call this as successor of M as well. But to be very specific, it is a child of M. Correct. Similarly, all these four are successor of this guy. Is this making sense? है ना, वैसे टर्मिनोलॉजीज है, ये दोनों को ब्रदर सिस्टर नोट्स बोलते हैं, एंड इसको और इसको कजिन्स बोलते हैं, एंड ऑल दीस थिंग्स. ठीक है, इट्स ऑब्वियस. ठीक है, थोड़ा ही टर्मिनोलॉजी विल बी लर्निंग, राइट. यू कैन सी दैट लाइक हाउ दे आर आस्किंग कि बी का एंसेस्टर्स है ये तीनों, करेक्ट, एंड डब्ल्यू का डिसेंडेंट्स है ये तीनों, करेक्ट. इज दिस मेकिंग सेंस? All these three are descendants, मतलब successors. Descendants is nothing but successors. And same way ancestors का मतलब है predecessor. Okay, so B का parents है ये सब, right? All these three, so they are the ancestors of B. It is the same way these three nodes are descendants of W. Can I directly access M to B without GD? You can't. M to B, how can you access it? Like if I give you a linked list as well. Okay, I didn't even talk about traversal. Okay, so we'll keep that thing. Okay, but if you want to go here, you need to pass through these things, na? So these guys are also called as M ka descendants, but all these three guys are individually called ancestors of B. Okay, so apart from all these things, so these are complete trivial things. Okay, so then there's a concept called subtree that comes into the picture. Okay, so what is a subtree? Descendants, Chirag asking what is descendants. Descendants are anyone who is your child or who are coming in your family tree. मतलब हाँ, उसके बच्चे और उसके बच्चे उसके बच्चे, whoever, like from you, whoever is coming, those are called descendants. हाँ, after you. D can be said as successor of G, correct? Or is successor used to only used in terms of food? No, no, Arundhati. Yes, D is a descendant of G, correct. Sorry, D is a successor of G, correct. G is the descendant, ancestor of D. Okay, so it's not just the root. Every value can be a descendant, and every value can be an ancestor, except the leaf nodes, which can't be ancestors of any values. Okay, so J is predecessor of B. No, J is not a predecessor of B. Right, predecessor matlab like they should be these things, right? They should be coming from them. Okay. Anyway, these terminologies are not important. I'll tell you where you need to focus much. Okay. There's a concept called subtree. So what is this subtree? There's something called tree, which is identified from its root. Okay. And if you take any child of this guy, okay, or any successor of this guy and call it as a tree by considering this as a root. For example, I consider this as a root. Okay. So this is the subtree of it. Guys, this is making sense. Okay, so this is a root which using which we can identify the whole tree, correct. If you take a child of this thing and if you consider this as a root and you identify a tree, that is called a subtree. Well, it's a part of that tree, correct. Subtree is a part of a tree where any of the root is one of the like descendant of the root. Okay, so subtree is like this can also be a subtree, right? This can also be a subtree. Even this one node is also can be a subtree. This is making sense. It's like a part of tree. Okay, it is a part of tree. Okay, but no, I'll tell you. We'll go ahead. Okay, it's a part of the tree, which is from of which the root is one of the child. I mean the descendant successor. Right? Correct. Okay. N is also a subtree. Where is N? Yeah, even single node can also be called as a tree. Do you guys agree?
if there's only one single node, can this be called as a tree, guys? Yes, it can be called. It is satisfying all the three properties, right? Key, it's a root, it's a leaf itself, and it is not having any parent that is greater than one, right? So it can be called as a tree. Okay. So let me move forward. No, subtree का मतलब है कि it should follow all the rules of tree, ना? Then only it will be a tree, right? Then there's another concept called depth and height. Okay. So let me tell you what is the depth. Okay, listen to this carefully, guys. Stop talking. Okay. So depth is the length of the a node's depth is the length of the path to the root. Okay. So what is the depth of P? You can understand that it is the length of the path from the root. Just देखो 1 and then 2. The depth of this node is 2. Depth of this node is 3. Guys, just listen to this. Okay. Depth of a node. Depth is defined for a node. Okay. So node's depth is the length of the path to the root. मतलब root से कितना नीचे है, that is called depth. Is that cool? Is that understood? Right. For example, D ka what is the depth? It is 2. Right. What is the depth of B? It is 3. What is the depth of J? It is 2. Because the length is 2. Right. The same way the length is 2 here. Right. Huh. Depth of a root value is 0. है ना? Okay, if you come one distance from it, it is 1. If you come another distance from it, it will be 2. Correct? Okay, depth of a root is 0. Okay. It's not number of parents, it is the length of the path to the root. Okay. And then comes height. Okay. What is the height? Height is defined for a tree. Okay. Height is not defined for a value. Okay. So so height is basically, so height is not for a value. Okay. So height is nothing but length of the longest path from the root to the leaf. It is nothing but maximum depth. You can call height equals to maximum of I of all the depths. जैसे देखो, like what are the depths? If you want me to list all the depths, it is 0, it is 1, it is 2, it is 3, right? What is the depth of this particular node? It is 1. What is the depth of this particular node? It is 2. The depth of this particular node is 2. Depth of this particular node is 3. Depth of this particular node is 3. Okay. So if you consider this as a root, okay, then depth of this node is 3, right? So it is the maximum depth of all the nodes, right? So height of this tree is equals to 3 because depth is 3 here, right? The maximum depth, right? So it is defined in such a way that a tree's height is the length of the longest path from the root to its leaf. Okay? The same thing, na? Like path from root to any of the value is called its depth, right? So you're just taking the maximum depth. Do you guys agree with this? Longest path is called height of the tree. Yeah, you can call it in that way. Okay? Height is 2 for G to B. Okay. So if you consider this tree where this guy is the root, okay, just listen to me carefully. Okay. If this guy is the root, okay, then you can see that depth of this particular node is 2, right? You can see that the distance between root and this value is 2. So depth is 2. So the maximum depth you can get out of all the nodes is 2 only. So height is 2. Do you guys agree? If you consider this as a tree, मतलब इस सब tree के लिए, for this subtree, height is 2. Okay, for this subtree, height is 3, right? Because like if you calculate from here, it is depth will be increasing, right? Till the end. Is this making sense? Shall we move forward? So remember these things, guys. These are very important. Okay, मतलब it might be looking very trivial right now, but इसी बेस पे बड़े-बड़े questions बन जाएंगे. And then if you are not even sure what is the depth and what is the height, ठीक है? ये दोनों के बीच में difference नहीं पता हो ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, right? So I am telling again and again, depth is for a node.
क्या बोलेगा, नोड और रूट के बीच में डिस्टेंस, राइट. एंड हाइट इज फॉर ए ट्री, हाइट ऑफ द ट्री बोलेंगे. डेप्थ ऑफ अ नोड बोलेंगे, डेप्थ ऑफ अ ट्री नहीं बोलेंगे. इज दैट कूल? ठीक है, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. ठीक है. सो ओ, इट इज देयर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ट्रीज इज नथिंग बट अ फॉरेस्ट, राइट. सो ठीक है, यू विल नेवर यूज दिस, इट इज जस्ट अ फैंसी थिंग, यू विल नेवर यूज दिस. ठीक है, मतलब किसी क्वेश्चन में आ सकता है. Like in the Flipkart question, I got this. Okay, forest वाला keyword, but none other than it is not. Okay, so there are certain type of trees, guys. Okay, so what did we learn till now? Okay, if you want me to summarize, okay, so in trees you learn terminology. What are the things you learned? Okay, you learned what is a root. You learned what is a child. You learned what is a node. Node matlab every value, right? I mean every unit value, just like the linked list. Okay, it is a node. Root is a node from which all the nodes can be accessible, and it can identify a tree. Correct. So and then child aata hai, right? And then comes like what did we learn? Ancestors. Like ancestors, you can call it as parents. You learned about child, you learned about parents, you learned about descendants. I'm not sure what is the spelling, but descendants. ठीक है, उसके बाद क्या क्या पढ़ा हमने? We learned about height, very important. You learned about depth, correct? Depth of a node, right? Height of a tree, correct? So these are the things that we have learned. Okay. Now you're going to enter the segment where you are differentiating the trees. Okay. So you learn properties of trees. What are the properties? Every node should not have more than one parent, right? Except the root, which has no parents. The other thing is key. Other thing is key childs, right? They can be 0 or more number of childs for any values except the leaf values. The other thing is key every node should be reachable from the root. Correct? These are the things that you guys learned. Anna? Right. Please tell height with an sure. See, Mohit. Okay, I'll tell you about balanced and unbalanced. So let's not use such words before I tell it. Okay, it will confuse a lot of people. Okay. So there's another thing that is called subtree. Subtree is nothing but a part of the tree where any of the node can be considered as a root, and whatever the tree that is formed considering a particular node as a root, that is called a subtree. Okay, so these are the things. Now you are learning what are the types of trees. Definitely there are many types of trees. Okay, so there are usually two types of trees. One is general tree. Okay, this is also called as an array tree. ध्यान रखना इसका. And there's another thing called binary tree. ठीक है. So तुम्हें पता है ये चीज कि sorting करोगे, when you are sorting a value, sorting an array, there are two types of sorting, right? One is ascending way of sorting, the other one is descending way of sorting. मतलब 1 2 3 4 ये type of sorting है, ऐसे increase होना. The other type of sorting is this one. Do you guys agree? Right? Yes, leaves can also be a subtree, correct? ठीक है. So but usually क्या बोलते हैं कि if you are asking about sorting a tree, ठीक है, usually what people think is कि हाँ अच्छा sorting मतलब ascending ही होता है, right? People use it in interchangeable way, correct? But that's not the right thing to do. ठीक है. If you're actually knowing what is the meaning of sorting, ठीक है, you should be knowing that descending is also sorting, is a type of sorting. ठीक है. So such type of things can also be checked in the interview. ठीक है, तो ये चीजों के बारे में क्लियर रहो. सॉर्ट बोला, इट डजंट मीन दैट वो असेंडिंग वे में सॉर्टेड है. ठीक है, तो अगर तुम इंटरव्यू से ये चीज पूछोगे कि सर लाइक यू सेड द array is sorted, can you let me know if the array is sorted in an ascending order or an descending order? अगर वो एग्जांपल नहीं दिया तो तुम ये चीज पूछ सकते हो. अगर तुमने ये पूछा ना, तब उसे लगेगा कि यू एक्चुअली नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग.
Is that cool, guys? ठीक है, तो वैसे ही लाइक व्हेन दे टॉक अबाउट ट्रीज, ठीक है, यूजुअली मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड इट एज बाइनरी ट्री ओनली, ठीक है, मतलब ट्री मतलब बाइनरी ट्री समझने लगेंगे, बट यू गाइस आर विजिलेंट इनफ, यू गाइस आर माय स्टूडेंट, सो यू गाइस शुड बी नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ जनरल ट्री एंड अ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल ट्री एंड अ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो जनरल ट्री का मतलब है कि एवरी नोड कैन हैव 0 to n number of childs, मतलब एक नोड है, अगर मैं n का वैल्यू 5 रख दिया, ठीक है, दिस गाय कैन हैव 5 नोड्स एज द चिल्ड्रन एंड दिस गाय कैन हैव 5 max, but if he decides to have only one, it's fine, ठीक है, but if this guy is greedy and if he wants all the 5 children, then it's great, you can let him have, or if you want to have only 3 nodes, ठीक है, it is fine. So this is called a general tree, this is called n array tree. N array tree says that every node can have 0 to n number of children, ठीक है, so it is 1 2 3 4 5 6, like you can name it anything, you can number anything, ठीक है, so 15 16 17, ठीक है, so that is called n array tree, ठीक है, मतलब इसको जनरल ट्री भी बोलता है, लेकिन आई एम जस्ट गेटिंग टू स्पेसिफिक अबाउट इट, ठीक है, तो इसको ये बोलता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या है गाइस, बताओ, यू नो व्हाट इज बाइनरी, राइट? बाइनरी मतलब दो, है ना, तो बेसिकली इसमें ये है कि यू कैन हैव ईदर 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यू कैन हैव 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यू कैन हैव 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इफ यू हैव अ रूट, ठीक है, दिस इज अ रूट, this guy can have 2 children, this guy can have only 1 children, it's his wish. If this guy don't want any children, then it's fine, or if this guy's children also want many number of children, then it's fine as well, right? So this is a binary tree, right? मतलब 2 number of children maximum हो सकते हैं, correct? No Mohammed Shamil, about the root also, it applies everywhere the same thing unless I specify, ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि रूट के लिए अलग रूल है, तब यू शुड बी नोटिंग इट डाउन, वरना एवरी रूल आई एम टेलिंग इवन दैट इज कंसिडरिंग रूट आल्सो एज द नॉर्मल नोड ओनली, ठीक है। अगर एन एरे ट्री में इवन रूट कैन हैव ओनली 4 और 2 और 1 और 0 नंबर ऑफ चाइल्ड्स, इज दैट क्लियर गाइस? देखो यहाँ पे बाइनरी का मतलब है दो, ठीक है, तो तुम्हारा जो बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम, यू आर कंफ्यूजिंग दैट विद दिस, ठीक है, देयर यू आर टॉकिंग अबाउट 2 numbers 2 digits, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 2 चिल्ड्रन, राइट? बाइनरी ट्री मतलब 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं एट मैक्स, ठीक है, बाइनरी मतलब 2, है ना, इन दैट कंटेक्स्ट दे आर टॉकिंग की बाइनरी चिल्ड्रन, ठीक है। यू कैन आल्सो हैव 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, गिरिराज, ठीक है, वेरी ग्रेट, एवरी ट्री, ठीक है, एवरी बाइनरी ट्री इज अ जनरल ट्री, ठीक है, बट एवरी जनरल ट्री इज नॉट अ बाइनरी ट्री, दैट्स करेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, एक जनरल ट्री है, ठीक है, दिस इज अ जनरल ट्री, उसमें बाइनरी ट्री एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री है, बीटी, ठीक है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, करेक्ट, इज दिस क्लियर? ठीक है, चले आगे, यू कैन हैव 2 एज वेल, राइट, यू कैन हैव 2 एज वेल, सी यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है ना, यू कैन हैव टू चिल्ड्रन एज वेल, every general tree is not a binary tree, correct? Shall I move forward? Any doubts? Let me know in the chat. To the person who's asking me to unmute, just let me know in the chat. I'll let you unmute if you want, if it's genuine. चले, चलो, okay, great, ठीक है, तो like you can see every node can have arbitrary number of children, ठीक है, मतलब थोड़ा specify कर लो पहले, right, at most 2 children, ठीक है, एंड हाँ इसको लेफ्ट और राइट भी बोलता है, ठीक है, मतलब नाम भी दे दिया पहले, लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, क्योंकि 2 ही है ना, लेफ्ट राइट दे ही सकते हो गाइस,
this person, देखो ये root है, so this is called left child and this is called right child. ठीक है, तो like they say that often tree means binary tree. That is very often. ठीक है, so don't confuse with often with everything. ठीक है, एक second यार, मोहित wants to unmute. हेलो सर। बताओ। सर आपने पीछे डिस्कस किया था कि ये ट्री और नोट और ट्री, इसमें मुझे डाउट है, एक बार वहां चल सकते हैं? बोलो क्या हुआ। जो कि बाइनरी ये ट्री है या नहीं है वहां पर? हाँ, ट्री और नोट ट्री। या सर ये नोट ट्री कैसे हो सकता है? 4 7 8 9 ये डाउट। 4 7 8 9 कैन बी अ ट्री। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने बोला कि ये एक ट्री है और ये भी एक ट्री है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक ट्री नहीं बनेगा, वो फॉरेस्ट बनेगा। फॉरेस्ट बनेगा। जैसे इसके नीचे लिख रहा है अ ट्री, बट इसके नीचे नोट अ ट्री, व्हाई? एंड 5 4 7 8 5 4 7 8 नोट अ ट्री, दिस इज अ ट्री। सो ये वाला, हाँ सर 5 4 7 8। so see, you can see that 8 के ऊपर 8 is having two parents ना, 4 is also a parent and 5 is also a parent, which is not possible. This is called a graph. देखो इसको ग्राफ 5 का चाइल्ड है ना 4। 5 का हाँ 5 का चाइल्ड है 4, सो और 4 के 2 चाइल्ड है 7 एंड 8, तो प्रॉब्लम क्या? तो किसकी बात कर रहे हो ब्रो? इसकी बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? 1 2 3 4 में बताओ किसकी बात कर रहा है? ओह आई नो, एक ही नोड से, मतलब एक ही पेरेंट से दो कनेक्शन नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ 5 जो है 4 से भी कनेक्टेड है और 8 से किसकी बात कर रहा है? which are you talking about? 1 या 2 या 3 ना? हाँ, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? 5 4। तो सर ये पूछना था कि 5 जो है 4 से भी कनेक्टेड है और 8 से भी कनेक्टेड है। हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये ट्री नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये लिंक नहीं होता ना बीच में, देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, अगर हमारा ट्री ऐसा होता, ठीक है, देन इट इज कूल। ठीक है, बट it is not possible because 8 is having 2 parents, which is not correct according to the second rule, है ना? Each node should exactly have one predecessor, one parent ही होना चाहिए। This guy is having 2 parents. See, 4 भी parent हो गया और 5 भी parent हो गया। So this thing is called a graph. It's not a tree. It's not a tree. Yeah. इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये ट्री नहीं है। ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, ऐसे भी चाहिए। ठीक है, अगर समझ लो तुम्हें तुम्हें समझ लो दिल्ली से वैजाग जाना है। ठीक है, एक रास्ता है कि तुम दिल्ली से वैजाग आ जाओ, या तुम एक रास्ता है कि हैदराबाद जाओ फिर हैदराबाद से दिल्ली आ जाओ, वैजाग आ जाओ, राइट? सो दिस इज आल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट? है ना? राइट, सो फॉर दैट ग्राफ्स आर टेकिंग केयर ऑफ इट, बट ट्रीज आर अ मच सिंपलर थिंग्स। ठीक है, ओके सर। So even this is the practical thing. This is another type of data structure that you are going to learn in future, not right now. ठीक है, cool. Yes sir, cool. Okay. I can see some chat, man. यार क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये सब चैट? ओके, सो ठीक है, तो तुम लोग आई थिंक एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, सो दैट यू गाइस कैन अनम्यूट ओनली मी। ठीक है, सो आई विल जस्ट सी। ठीक है, if at all you guys are not understanding anything, I'll unmute you. ठीक है, ठीक है, फॉर नाउ लेट्स स्टे म्यूटेड। ठीक है, अनम्यूटेड एंड नो चैट एज वेल। ठीक है, सो देखो अब सुनो। ठीक है, मैं इसीलिए वो सॉर्टिंग वाला एग्जांपल लिया तुम लोग को ये दिखाने के लिए कि हाउ सॉर्टिंग इज कंफ्यूज्ड विद असेंडिंग सॉर्टिंग, राइट? सो सॉर्टिंग जैसे असेंडिंग सॉर्टिंग की तरह, like how it is misunderstood, मतलब it's not misunderstood, it is a general practice कि if at all you say that a array is sorted, it means that people usually tend to think कि it is sorted in ascending order, correct? तो that is a usual thing, but अगर कोई इंटरव्यूअर में तुझे बोला कि it's a sorted array and he has not given you any example or said that it is sorted only in the ascending order, only in the descending order, you can ask him। ठीक है, द सेम वे इफ एट ऑल दे से दैट कोई भी क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इट्स अ ट्री,
you should ask him if it's a binary tree or if it's a general tree. That is very important. Even though तुम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हो सब बाइनरी ट्री में करने वाले हो, ठीक है, लेकिन वो पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी चलो यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ बाइनरी ट्री में भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। सो विल डिस्कस दैट टाइप्स नाउ, ठीक है। सो आई थिंक या let's talk about special type of binary tree, okay? So we laid the foundation of what is a tree. We understood what is a binary tree. Binary tree is a tree where every node can have 0 to 2 number of childs, ठीक है। तो देखो अभी देखो हम ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे, मैं करूंगा ये सब नॉट राइट नाउ, ठीक है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। So what are those trees? Let me explain in the PPT, then it will be much clear for you, ठीक है। तो जैसे बाइनरी ट्री है, you understood what is a binary tree, right? There are certain types of binary trees, ठीक है। बाइनरी ट्री एक ही टाइप का नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारे टाइप है, लेट मी नेम वन बाय वन। एंड कोई भी ट्री दिखाऊंगा, तुम लोग को बताना होगा कि वो क्या है, ठीक है। इट कुड बी अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, इट कुड बी अन अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ठीक है। you can call a tree as perfect binary tree, ठीक है। you can call it as complete binary tree. There's something called strict binary tree. There's something called skewed binary tree, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, ठीक है, कुछ नहीं है ये सब, एक एक करके हम सबको हराएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, सबसे सिंपल, परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहता है? परफेक्ट बाइनरी ट्री में ये कहता है कि एवरी नोड should have 2 children except नहीं, this thing is wrong, ठीक है। this is called full binary tree. Let me add one more category, it's called full binary tree, ठीक है। so full binary tree says that every node should have 0 children or 2 children or 0 children, ठीक है। that is full binary tree, ठीक है। so let me give an example. For example, if you have a node, ठीक है, this can have either 2 children or 0 children, ठीक है। so you can't have one children, right? You can either have 2 children or you can have 0 children, right? If you have 2 children, it will be marked as like this, okay, something like this, right? So this is called a full binary tree, okay. So what is a perfect binary tree is कि every level, ठीक है। so for example, this is the level 0, like level 0 है ये, मतलब depth 0 समझ लो, ठीक है। ये level 1 है, correct? This is another level, right? Level 2, this could be called as level 3. Every level should be filled with nodes, that is what it says, मतलब 2 children ही होना चाहिए, but every level should be filled. You can see that यहाँ पे इस level fill नहीं है, right? So like level 3 is not filled, but in a perfect binary tree, every level should be filled. You can choose, like this is a perfect binary tree, this is another perfect binary tree, right? This is another perfect binary tree, right? You can see that every level is completely filled, right? मतलब हर बंदे के पास 2-2 नोड होनी चाहिए जिससे हर लेवल फिल होगा। अगर एक भी बंदा यहाँ पे है ना, दैट्स नॉट कॉल्ड अ परफेक्ट बाइनरी ट्री unless all the persons should be having nodes here. So this is called perfect binary tree. Every level should be filled. Is this clear, guys? तो परफेक्ट बाइनरी ट्री में बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पर 0 नंबर ऑफ नोट्स है, यहाँ पे 2 पर 1 नंबर ऑफ नोट्स है, यहाँ पे 2 पर 2 नंबर ऑफ नोट्स है, यहाँ पे 2 पर 3 नंबर ऑफ नोट्स है। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री? हाइट कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। हाइट इज 3, राइट गाइस? हेलो?
right? Height is nothing but maximum of depth. What is the depth here? Depth is 3 यहाँ पे, depth is 2 यहाँ पे, correct? So right, तो height यहाँ पे 3 है, correct? तो right, so height यहाँ पे 3 है. So can you guys tell me what is the number of nodes in this perfect binary tree? It is nothing but 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2 plus 2 power 3. Do you guys agree with my statement? Correct. So what is this thing? It is nothing but, this is nothing but 2 power 4 minus 1. Do you guys agree? Hai na? This is nothing but what is this thing? Geometric progression, right? There's common difference as 2. आता है ना ये सब, guys? Right? So I can call it as 2 power 0 plus 2 power 1 ऐसे till 2 power h. This is nothing but 2 power h plus 1 minus 1. Do you guys agree with this statement? But these are the number of nodes. Number of nodes n equals to 2 power h plus 1 minus 1. If at all it's a perfect binary tree, guys, mind it, perfect binary tree. What is not clear? More be specific. What is not clear? I'll repeat it once more. Again. Do you guys agree that at this level, when the level is 0, you have the 2 power 0 number of nodes? Correct? यहाँ पे 2 power 1 number of nodes है, यहाँ पे 2 power 2 number of nodes है, यहाँ पे 2 power 3 number of nodes है. Do you guys agree? और एक और level होता तो यहाँ पे 2 power 4 number of nodes होंगे. Do you guys agree? Because of the perfect tree property, है ना? Correct? Right? So, like, what are the total number of nodes? That is nothing but 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2 plus 2 power 3, right? So ये level नहीं है, so 2 power 3. This is nothing but, ठीक है? If you guys know it, ठीक है? It is nothing but a into 2 power, like a into common difference, that is r power n minus 1 plus n plus 1, right? Something like this, n minus 1, I'm sorry, right? R minus 1, correct? So this is the nth term of a geometric progression, correct? Do you guys agree? Right? R is 2, that is 2 power n plus 1, right? That is this particular thing, that is 4. Okay, 3 plus 1 is 4 minus 1, that is 4, and 2 minus 1 is 2 power 4 minus 1. एक बार सोच लो इसके बारे में. Just try to think about this thing कि कैसे काम कर रहा है. Right? Are you guys finding yeah, height is h? No, it is not possible, Chirag. ठीक है? तो देखो, like ये चीज तो like this is comes from geometric progression. ठीक है? 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 3 plus 2 power 4 2 power 3 equals to 2 power 4 minus 1. That is what it is, right? वैसे जितना तक जाएगा उसका h plus 1, h तक जाएगा तो h plus 1 minus 1, right? So the total number of nodes n is equals to 2 power h plus 1 minus 1. Agreed? है ना? Clear for everyone? ठीक है? So that is what perfect binary tree is. ठीक है? Let me tell you about the most important tree, that is complete binary tree. कंफ्यूज मत होना कंप्लीट में, परफेक्ट में, फुल में. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. ठीक है? I'll just find that article. There's a great article which I use every time. ठीक है? I'll just find it. Just give me some time. ठीक है? So perfect binary tree says that, एक बार सुनो, complete binary tree says that every level should be filled except the last. मतलब not necessarily the last, kind of. Not necessarily the last level, but nodes in the last level should be as left as possible. क्या मतलब है इसका? देखो, if I choose this thing,
Okay, if I choose this is a perfect binary tree, right? But if I choose this thing to be like this, okay, this is a complete binary tree. Okay, because every level is filled. You can see that you have 2 power 0 you have 2 power 1 right? But this guy, this level इसमें 4 होनी चाहिए, but there's only one node, correct? It is not completely filled. Okay, but the last level is not completely filled. Nodes in the last level should be as left as possible. You can see that it is as left as possible, right? So if you want to add one more value to it, one more node to it, you can't add it here. You should be adding it here to make it as complete binary tree. देखो, the nodes are as left as possible. अगर मैं एक और value ऐसे add करूँगा 6, then this is not a complete binary tree because 6 का position ये होना चाहिए. It should not be this one. Now this is a complete binary tree, correct? You can see that every level should be filled. Okay, not necessarily the last level, but nodes in the last level should be as left as possible. They go as left as possible. Like if you choose one more value here, it is again perfect binary tree. This is a complete binary tree. This is a complete binary tree. This is a complete binary tree. This is not a complete binary tree. No. This is a complete binary tree. This is not a complete binary tree. No. Right? Let me just show you. ठीक है, अगर मैं 12 को यहाँ पे रखूंगा, this is not a complete binary tree. 12 इस तरफ होना चाहिए. Only then it should be a complete binary tree. The last level का nodes, even if it is not completely filled, they should be as left as possible. Right? Is this making sense, guys? देखो full binary tree में you can't have a single nodes. ठीक है, यहाँ पे single nodes हो सकता है, right? And also there is no clause in the full binary tree कि हर level fill होना चाहिए. लेकिन complete binary tree में ऐसा बोलता है कि हर level fill होना चाहिए, except the last level where the nodes must be as left as possible. Correct? No, values don't matter, bro. Ajay, you're mistaken. Don't bother about these values. I'm just marking them for fun, right? So values doesn't matter. Okay? It is just the structure of the tree matters. It should be as left as possible. The last level should be as left as possible. देखो यहाँ पे left में है ना possible. नहीं, right side होता it's not a complete. Only left होना चाहिए. 7 has a 13. It's not a complete binary tree. Correct. I'll show you a great thing. Just wait. Wait. Compare full and complete, right? देखो full में ठीक है. See, in full, ठीक है, you can see that every node can have 0 or 2 number of nodes. ठीक है, they didn't tell anything about the filling the levels, right? So this is a full binary tree. You can see that इस level में सब values नहीं है और इस level में भी सब values नहीं है, right? It is kind of very random. Do you agree? यहाँ पे भी 2 value और रख दो. Even this is a full binary tree. Is this making sense? Perfect binary tree हर level fill होना चाहिए, उसका तो clear है. इसमें you can have 0 number of children or you can have 2 number of children. ठीक है, 0 देखो, this guy is not in the last level, but this guy is a leaf, correct? This guy is not having any child. यहाँ पे complete binary में you can have single child also, it's fine, but every level should be filled and last level should be having nodes as left as possible. Should be saying देखो 7 bro, I'm not saying कि full में हर level fill होना चाहिए, ठीक है? Perfect में हर level fill होना चाहिए, full में हर level fill नहीं होगा, ठीक है? Not necessarily, ठीक है? हर level full होगा, but every node should have 0 or 2 number of children. Perfect binary tree is a complete binary tree. I agree with you, Mohammad Talib, right? I agree with you.
कंप्लीट बाइनरी ट्री इज परफेक्ट बाइनरी ट्री अप टू वन लेवल अप. नो, ये क्या स्टेटमेंट है? एक ट्री का स्ट्रक्चर तुम ऐसे नहीं चेंज कर सकते, राइट? तो तुम अगर लास्ट लेवल के नोट्स हटा दोगे, इट विल बिकम अ परफेक्ट बाइनरी ट्री. इज दैट कूल? करेक्ट. ठीक है. सो समवन इज सेइंग कि लेफ्ट एज पॉसिबल का मतलब क्या, समझ नहीं आया. ठीक है. सो देखो ब्रो, ठीक है. सो एवरी वैल्यू, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ नोट्स लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे 4 स्पॉट है ना? ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है. लाइक ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है, एंड ये एक स्पॉट है. एंड समझो ये ऐसा है, मतलब ये सबसे लेफ्ट है और ये सबसे राइट है. सो अगर मैं 3 वैल्यू दूंगा, तो कौन से 3 में रखोगे? 1 2 3 में रखोगे, तभी तो इट विल बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. डू यू गाइस एग्री? अगर इफ आई गिव यू 2 नोट्स, 1 और 2 में रखना चाहिए तुम्हें. इफ आई गिव यू 1 नोट, 1 में रखना चाहिए. तो उसको बोलते हैं एज लेफ्ट एज पॉसिबल. अगर 4 नोट दे दिया, तो 1 2 3 4 में रख दो. करेक्ट. इज दैट कूल गाइस? आर यू लिसनिंग? हेलो, है ना? एज लेफ्ट एज पॉसिबल का मतलब ये है कि ये सबसे लेफ्ट नोड है, उसके बाद वाला लेफ्ट नोड ये है. मतलब देखो, ये सबसे लेफ्ट है ना, ये सबसे राइट है ना, तो एज लेफ्ट एज पॉसिबल रखो नोट्स जो भी मिलेगा, तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा. ठीक है. देन 2 3 चीज और, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई एग्री, इसलिए नोट्स रखने के लिए बोला था यार. तुम लोग नोट्स नहीं रख रहे हो तो कंफ्यूजिंग तो होगा. Abhishek says कि if parent has 3 notes, then what it will be called as left as possible. See, Abhishek, पहली चीज पहली चीज, हम उस डिस्कशन से बाहर आ चुके हैं जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रीज. एक जनरल ट्री होगा, एक बाइनरी ट्री होगा. अब हम बाइनरी ट्री का एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना? तो हम ऑलरेडी इस डिस्कशन से आउट हो चुके हैं कि जनरल नंबर ऑफ ट्रीज हैं. ठीक है. वी टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री. इट्स नॉट कंप्लीट ट्री, इट्स कंप्लीट बाइनरी ट्री. देखो मैं ये चीज लिखा हूं, राइट? सो दीज आर टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज. आर यू गेटिंग इट? करेक्ट अश्विनी. चले मूव फॉरवर्ड, या थोड़ा टाइम चाहिए नोट करने के लिए सब? ठीक है. नेक्स्ट प्लस प्लस. ओके ग्रेट. ठीक है. सो यहाँ पे पढ़ लेना, एवरी लेवल एक्सेप्ट लास्ट इज कंप्लीटली फिल्ड. Notes on the bottom level are as far left as possible. No holes. No holes. देखो, no holes होनी चाहिए, मतलब like every level should be filled. Is that cool, guys? ठीक है. अच्छा, मैंने कुछ और भूल गया. ठीक है. I told you something else. ठीक है. अब कुछ बचा है, that is balanced binary tree and unbalanced binary tree, right? So what is balanced binary tree is maximum difference. ठीक है. Difference, okay, difference between, right? Like I'll show you. ठीक है. हाँ, I'll share the PPT, don't worry. I'll show you an example, it will be much clear for you. ठीक है. Balanced binary tree में height of 2 subtrees का height should never be crossing more than 1. ठीक है. So I'll just show you. Then they're trying to build this logic of saying कि trees recursive होता है. देखो ये binary tree है, और इसको like if you consider this, you can see that this is a left subtree and this is a right subtree. Are you guys understanding this thing? ये रूट है, ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री समझाने की कोशिश कर रहा है. इज दिस करेक्ट? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? नॉट नेसेसरली इक्वल नंबर ऑफ नोड्स, बट ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है, बिकॉज ये राइट वाला नोड है. करेक्ट. दिस विल एक्ट एज अ रूट फॉर दिस सब ट्री. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ आई थिंक दे विल इंट्रोड्यूस द बैलेंस सब ट्री वाला प्रॉब्लम, राइट? या
हाँ, so they are trying to explain the recursive nature of binary tree, जो हम बाद में explore करेंगे थोड़ा properly, इससे better तरीके से. ठीक है, तो let's skip this for time being. Comparing searches, I think PPT इतना ही relevant है हमारे लिए. ठीक है, we'll come back to this PPT later. ठीक है, I'll send you this PPT, but यहाँ तक ही relevant है तुम लोग के लिए. Just understand कि एक binary tree है. There's something called left subtree, which is also a binary tree. मतलब इसको root समझ के. And there's another thing called right subtree, right? So at any point, difference between height of left subtree and right subtree should be less than or equal to 1. Then it is called as balanced binary tree. ठीक है, अब देखो, if I give you a value like this, is this a balanced subtree, balanced binary tree, so guys focus here, just focus here on my PPT. ठीक है, कहीं और मत देखो. If I give you a node like, if I give you a tree like this, do you think this is a balanced binary tree? I think it's a balanced binary tree. एक बार सोचो. I think सोचो ना एक बार. Like देखो यार, ये root है, ठीक है. What is the height of left subtree? What is the height of left subtree? This is 1. Height 1 है ना? और यहाँ पे 0 है height. What is the distance between them? 1 minus 0 is 1, right? Guys, is it making sense? I'll show you even good examples. Just wait. Okay. Just see this. Do you think, guys, this is a balanced subtree, balanced binary tree? Yes. Height of left subtree is 1. Height of right subtree is 1. Okay. So, okay. Yeah, it is a perfect tree, but perfect tree can also be a perfect tree is always a balanced tree, right? So this is a balanced tree. Do you think, guys, this is a balanced binary tree? Yes. Just look at it. Okay. यहाँ पे इसका height 2 है, correct? Like देखो यार, height का कुछ thing है. In some textbooks, it is mentioned as कि if one node is there, it is called as having height 1. ठीक है? अगर 2 node है तो 2 height बोलेंगे इसको. थोड़े textbooks में height, like इसका height 1 ही बोलेंगे, right? It's little controversial. ठीक है? So जो भी height के बारे में लिखा रहेगा, just try to see the example कि what they are meaning by the height. ठीक है? And by then only just look at it. ठीक है? In some textbooks it says that height is calculated as number of nodes from the root to the leaf. ठीक है? And in some textbooks it is noted as number of the length of the path from root to the leaf. ठीक है? Maximum length of the path. ठीक है? I'll tell you. Wait, Dinesh. What is the height of left subtree? It is 2. What is the height of right subtree? It is 1. Don't you think the difference is less than or equal to 1? So this is a balanced binary tree. Okay? And if I have some value like 5, okay? So yeah. So even this is a balanced binary tree, right? Because 2, 2, right? If I have a value like this is 6. Just see this. Is this a balanced binary tree? It is not a balanced binary tree. Kyunki it is not just that difference between height of left subtree and right subtree देखोगे, ठीक है? तुम ये भी देखोगे, if this is a root, ठीक है? This should be balanced as well, ठीक है? In this level, you might feel that it is balanced. ये 3 है, ये 2 है. But in this level, can you see कि इसका right subtree is having a height of 0 and इसका right subtree is having a height of 2. 2 minus 0 is 2, right? So this is not balanced, right? If you consider this subtree, correct? Absolute difference लेंगे bro, अरे absolute difference ही लेंगे, ठीक है? बस मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका left subtree balanced नहीं है ना, ठीक है? Difference between the height of left subtree and right subtree should be less than or equal to 1. That is correct. And right, left subtree and right subtree should be recursively balanced.
और ये सब मेरा स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये गूगल का नहीं है, ठीक है। तो जो मुझे समझ में आया, जो मुझे काम आया, आई एम जस्ट टेलिंग इट इन दैट वे, ठीक है, ठीक है। सो यू माइट फाइंड अ वेरी फैंसी स्टेटमेंट्स, बट आई थिंक दीज आर वेरी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो देखो, लेफ्ट सब ट्री भी एंड राइट सब ट्री भी रिकर्सिवली बैलेंस्ड होना चाहिए। ये देखो, लाइक दिस गाय इज नॉट बैलेंस्ड, राइट? सो दिस गाय इज बैलेंस्ड, right? So you can see that this is not balanced because यहाँ पे you have the height 2 and यहाँ पे you have the 0, right? So this is not a balanced binary tree, ठीक है। अब तो unbalanced समझ ही गए होंगे, correct, correct. On every level it should satisfy this condition, Joshna, correct, balanced at every level. Or you can call it as कि this particular subtree should be balanced, this particular subtree should be balanced, and then these both should be balanced as well. I'll show you another example where you can see that. Right, you can see that this subtree is balanced, right? Even this subtree is also balanced, correct? This subtree is also balanced, right? But ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहा, राइट? इसका हाइट 3 है, इसका हाइट 1 है, राइट? दे आर नॉट बैलेंस्ड, राइट? इवन द लेफ्ट subtree is balanced, even the right subtree is balanced, right? The difference between them is not balanced, so it's not a balanced binary tree. थोड़ा ओवरलोड हो गया तो बताओ, right? At every level you should be checking कि, like for example, अगर if you want to check if this is a balanced binary tree or not, you should be checking कि इसका लेफ्ट सब ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, इसका राइट सब ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, देन ये दोनों के हाइट में कंपेयर करो और ये बैलेंस्ड है कि नहीं, ओनली देन इट विल बी बैलेंस्ड। तो तीन कंडीशन है, लेफ्ट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए, राइट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए, और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। एक और, ठीक है। So I think अभी मैं 2 मिनट, let me just go through my search history and just find that website, जिसमें से भी like I really like that, वहाँ पे you can find lot of examples, ठीक है। So let me find that article, ठीक है, and meanwhile you guys just formulate all these things, ठीक है। I hope you guys don't have any doubts. अगर कोई doubts है properly बना लो, और ये 2 मिनट के बाद हम वो डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज दैट कूल? हाँ, पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूं? अच्छा, पीडीएफ आई थिंक यार आई शुड बी ओपनिंग, ओके आई विल बी ओपनिंग द डिस्कॉर्ड, नो वरीज। एक बार डिस्कॉर्ड ओपन करके लेट मी पुट इट, उसके बाद लेट मी फाइंड फॉर दैट आर्टिकल, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट सर्च वेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इज, so I downloaded it, open folder, yeah, cool. Okay, I've sent this PPT. Don't go into depth of that PPT क्योंकि आगे बहुत सारी चीज है जो मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है, तो उस पे मत जाना, ठीक है। जहां तक पढ़ाया था वहां तक देखो, क्योंकि वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, दे आर नॉट मेंट फॉर नाउ, ठीक है। सो कूल, लेट मी जस्ट सर्च फॉर दैट।
Yeah. Hi guys. Sure. It's not a break. It's not a break. Okay. Just a second. I'll just go and fetch some water. Okay. So I'm sending that link. मिल गया मुझे. I was searching correct. It is on programs. ठीक है. So it's a beautiful article. ठीक है. इसको discuss करेंगे. उसके बाद break लेंगे. ठीक है. So I'll be just coming back. Meanwhile, just have a look at this particular article. ठीक है. तो ये सब देख लेना एक बार. And I'll be back. ठीक है. Yeah, guys, I'm back. So no, it's not a break. It's not a break. We'll take a break at 10 और 10 या थोड़ा लेट में. ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है ट्रीज में. So देखो यार, like you have these things. ठीक है, एड्रेस ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑल. हम इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे. ठीक है, राइट नाउ इस पे फोकस करो. द टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री. एम आई ऑडिबल गाइस? ओके. तो या तो अभी ऐसा है कि अ बाइनरी ट्री देखो यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री क्या है समझाया. ठीक है. So you can have 0 or 2 nodes, right? Perfect binary tree में हर level fill होनी चाहिए. Complete binary tree में as left as होना चाहिए. There's another thing which I didn't tell you. This is called degenerate tree or this is called skewed. ठीक है. So I'll just show you these things. ठीक है. So wait, I'll tell them. ठीक है. That is the only thing that is left. ठीक है. Balanced binary tree, just look at it. ठीक है. तुम देख सकते हो कि डिफरेंस कितना कैलकुलेटर हमें यहाँ पे देखो. डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. राइट. सो दीज आर द थिंग्स. आई थिंक बेस्ट तुम्हें यहाँ दिखेगा एग्जांपल्स में. सो आई डोंट सी द एग्जांपल्स हियर. सो लाइक यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे वी हैव सम एग्जांपल्स where they are actually testing ki if you are able to judge if this tree which type of tree or not. I think मैं गलत आर्टिकल पकड़ लिया. Okay, no worries, I'll send you that. ठीक है, we can discuss that tomorrow as well. ठीक है. ठीक है. So there are great examples in this particular thing. If you guys can search, then we can find. Or else मैं कल तक लेके आऊंगा इसको. ठीक है. Cool. Let's continue with it. ठीक है. ठीक है. Then you have something called skewed binary tree. ठीक है. Skewed binary tree is like this. मतलब which is completely opposite to the balanced tree. मतलब सबसे maximum होगा इसका difference. Right? So it's like a linked list की तरह समझ सकते हो. Is that cool, guys? Shall we move forward? ठीक है. So देखो, skewed है. ठीक है, cool. So these are the types of binary trees. ठीक है. तो अगर मैं तुम्हें एक binary tree दूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा कि is this binary tree a perfect binary tree? Yes. Is this binary tree a complete binary tree? Yes. Is this binary tree a full binary tree? Yes. ठीक है. अब ये करूंगा. Is this binary tree a perfect binary tree? No. Is this a complete binary tree? Yes. Is this a full binary tree?
सोचो, ठीक है, ये क्या है? लाइक अगर मैं ऐसा कोई ट्री बनाया, इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट, राइट? इट इज अ फुल, राइट? फुल है, कंप्लीट है. एंड व्हाट इज दिस? इज दिस अ परफेक्ट बाइनरी ट्री? नहीं. दिस इज अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. यस, बिकॉज देखो, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, और ये भी बैलेंस्ड है. करेक्ट? दिस इज मेकिंग सेंस गाइस? What if I put one more node here? Is this a full binary tree? No. Is this a complete binary tree? Yes. Right? Is this a perfect binary tree? No. Is this a balanced binary tree? Yes. Right? वैसे ही अगर मैं एक और वैल्यू लूंगा ऐसे, right? It's a full binary tree. Yes. Complete? नहीं. Right? Is this a perfect? नहीं. Is this balanced? Balanced के बारे में let me check. This is a balanced tree. This is a balanced, and this is balanced as well. This is balanced as well, right? But these both are not balanced, so balanced nahi hai. Agreed, guys? It's not a general tree as well, it's a binary tree only. Abhishek, दो नोड है ना? Why is this not a full? It is a full binary tree, bro. देखो टिक रखा ना यहाँ पे, टिक देखो. Why previous one not full? Which one is not full? This one is full. This is not full. Just see, full में क्या है? Full में इधर 0 या 2 होना चाहिए nodes ना. यहाँ पे देखो one node है ना. This guy is having only one node, correct? Which one are you talking about? 0 और 2 nodes. यहाँ पे देखो one child है यहाँ पे. Childs. At every point you should only have 0 or 1, 0 or 2 childs. Right? Chirag wants me to repeat for the balanced one. ठीक है, balanced हम करेंगे, ठीक है, एक और प्रॉपर कोड करेंगे बैलेंस्ड को चेक करने का, ठीक है, डोंट वरी, हम करेंगे वो चीज, ठीक है. तो बैलेंस्ड का एक और बार बताऊं तो, लाइक लेफ्ट सब ट्री शुड बी बैलेंस्ड, राइट सब ट्री शुड बी बैलेंस्ड, एंड इट इज ट्रू रिकर्सिवली, ठीक है, फॉर एवरी नोड लेफ्ट सब ट्री शुड बी बैलेंस्ड, right subtree should be balanced, and then the difference between left subtree and absolute difference between left subtree and right subtree should be less than 1, है ना guys? Shall we move forward? ठीक है यार, समझ गया, सब समझ गया सर. मतलब हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रीज होता है, ठीक है. बाइनरी ट्री में बहुत सारे टाइप है, परफेक्ट है, बैलेंस्ड है, बाइनरी ट्री है, ये है, वो है, और एक ट्री बहुत सारी चीज हो सकता है एक साथ, ठीक है. सब समझ गया? प्रो, राइट? तुम प्रो, आई एग्री, ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन बताओ, चलो सब सीख गया, लेकिन पेपर पे भी तो रखना है ये सब चीजें गाइस, करेक्ट? पेपर पे तो रखना है. हाउ डू यू पुट इट ऑन द पेपर? यू लर्न अबाउट लिंक लिस्ट, you learned how nodes will be connected to another nodes, right, in this way. So how are these things happening? कि you are creating a node, ठीक है, you are creating a node, ठीक है, and this guy will have one variable, ठीक है, क्योंकि एक number store कर रहा हूँ presently, and you will be having node next. So this reference variable, there is one reference variable which will refer to a different object of the same type, of this node type, correct? This is how you declared a node. Do you guys agree with this? In the linked list, this is a reference variable, this is not a node. It is not like कि एक node के अंदर एक और node है, उसके अंदर एक और node, ऐसे नहीं है. It is just a reference variable which will store the reference of another node. ये बस point करेगा दूसरे node की तरफ, इसका memory पूरा इसमें नहीं है. Agree करते हो? अगर मैं int I equals to 4 लिखूंगा, इसका memory पूरा like it's like a primitive data type, right? तो 4 मतलब int type का this will be stored here and I will be referring to it, right?
इन द सेम वे जब तुम नोड x इक्वल्स टू न्यू नोड करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, एंड मेमोरी एलोकेशन व्हाटएवर इज देयर दैट इज स्टोर्ड इन x. डू यू गाइस एग्री? इट इज नॉट दैट कि नोड x लिखते ही बन गया ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता. दिस जस्ट रेफरेंस वेरिएबल. डू यू गाइस नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल? हेलो, है कि नहीं? दिस इज द मेमोरी एलोकेशन पार्ट. दिस इज जस्ट रेफरेंस वेरिएबल पार्ट. Agreed? ठीक है, तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि अगर एक ट्री है, ठीक है, अगर इफ दैट गाय इज पॉइंटिंग टू 2 वेरिएबल्स, ठीक है, एंड दिस गाइस आर आल्सो पॉइंटिंग टू 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे जैसे एक रेफरेंस वेरिएबल के लिए स्टोर छोड़ दिया, वैसे यहाँ पे 2 स्टोर छोड़ दिया करके तुम लोग समझ ही गए होंगे. यू गाइस आर स्मार्ट, राइट? नोड होगा, जो भी वैल्यू रखना है, इंट वैल्यू होगा, इंट डेटा होगा, जो भी है, राइट? एंड नोड लेफ्ट होगा 1 वेरिएबल, दैट विल बी स्टोरिंग द रेफरेंस वेरिएबल टू द लेफ्ट नोड. और उसके बाद नोड राइट होगा, दैट विल बी स्टोरिंग द रेफरेंस टू द राइट नोड. डू यू गाइस एग्री? ऐसे ही होने वाला नोड का. हेलो, है कि नहीं? है ना? अभी मैं पूछता हूँ, ठीक है, मतलब इसके लिए तो हो गया. जनरल ट्री का क्या होने वाला है? जनरल ट्री का क्या सीन है? लाइक एन एरे ट्री का, लाइक दिस गाय कैन स्टोर एन वैल्यूज ना. व्हाट अबाउट दैट? व्हाट अबाउट दैट गाइस? उसके बारे में तो कोई बताया नहीं यार. थोड़ा सोच के बताओ इसके बारे में मुझे. लाइक दिस इज आल्सो नेसेसरी, राइट? करेक्ट. इट कैन बी अ लिस्ट ऑफ नोट्स, इट कैन बी अ एरे ऑफ नोट्स. ठीक है, तो जैसे लाइक इंटीजर का एरे बनाते वक्त यू विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस, राइट? int of n or whatever, right? तो वैसे ही, right, this is an array creation, right? In the same way you will be creating array of nodes. Do you agree guys? मतलब हमारा क्लास होने वाला है, ठीक है, array of node reference variables. ठीक है, हमारा क्लास होगा node, उसके अंदर एक डेटा होगा, डेटा वेरिएबल होगा जो डेटा स्टोर कर रहा है, एंड देन यू विल बी हैविंग एन array का वेरिएबल, you can call it as styles. So the headache of assigning it will be done by the implementation. When you are implementing a tree, the headache of implementing all these things will be done. Right now, you just declare the nodes ka array, reference variables ka array. Do you guys agree? Huh? Is this making sense, guys? In any way? Right? It's like an array maintain करो, और उसके बाद लाइक इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाएगा कि एक एक मतलब चाइल्ड ऑफ 0 को क्या मिलेगा, चाइल्ड ऑफ 1 को क्या मिलेगा. दिस इज नथिंग बट चाइल्ड ऑफ 0, है ना? दिस इज नथिंग बट चाइल्ड ऑफ 1, है ना? दिस इज नथिंग बट चाइल्ड ऑफ 2. एग्रीड? array or list, anything, it's an array का reference variable ले लो. This was general tree, but you are not going to use this anywhere. I'm just telling for the knowledge. ठीक है? Now tell me the questions that you have. I want you guys to ask me the correct question. Right question पूछो, फिर मैं समझूंगा कि तुम लोग को समझ में आया. Correct questions पूछो मुझसे. जिस तरह से questions पूछ रहे हो उससे मुझे पता चलेगा कितना समझ में आया तुम लोग को. Ask me the questions. Then there can be empty values for an array. Correct? You can have. और कुछ? Constructor chill है. We are not going into the implementation right away. ठीक है, तो we'll see that later. ठीक है. Why do we use more of binary trees compared to general trees?
Joshna, like you'll understand it as you go forward. Okay, like most of the data types where you try to build, see, you can't use a linked list, right? Linked list में एक ही node है, ठीक है? So binary step you can understand it as a first step to enter into the hierarchical data वाला world, है ना? So that is how it is, okay? So you'll be firstly writing the algorithms for the two variables, two nodes, and then you'll be extending it for the general trees, okay? So that is the reason why you'll be doing mostly for the this thing, क्या बोलता है, binary tree, ठीक है? या कलेक्शन फ्रेमवर्क यार है, ठीक है, लेकिन I'll discuss that at the end, ठीक है? नहीं, ये सब सही क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? मैं ही बता देता हूँ, देखो, we have learned linked list. The last 5 minutes lecture is we have learned linked list where you store one data, you understand the structure of a blueprint of a node. Okay, what is that? You have a value, you have a variable that is pointing to another variable. Trees mein you have a node which has some data, it could be value also. It is having two variables, okay? Two variables which will point into two nodes because it's a binary tree, right? तो ये बताया था, ठीक है, अगर जनरल ट्री है, यू विल बी हैविंग एरे ऑफ दिस थिंग्स, एनीवे कूल। तो पहला चीज क्या सीखा तुम लोगों ने, अगर लिंक लिस्ट पढ़ना सीखा, राइट? व्हाट यू गाइस एक्चुअली लर्न, you guys learned that you guys actually learned how to make a linked list, right? That is the first thing. Now I'll skip making the linked list right now, I'll skip making the trees right now, because making a trees is a manual process for now, correct? ठीक है, ट्रैवर्सिंग, हाँ, उसके बाद ट्रैवर्सिंग सीखते हैं, राइट? I'll teach you how to traverse an array, ठीक है? And right now we can't make a tree without in an automated way, ठीक है? You can make a tree, ठीक है? You can make a tree if you look at our questions in GFG, वो ऐसे वैसे बना देंगे कि एक नोड क्रिएट करेंगे, उसका लेफ्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे बना देंगे, राइट? सो इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ ट्री, ठीक है, अभी मैं मैनुअल में बता देता हूँ, ठीक है? इफ यू वांट मी टू क्रिएट दिस ट्री, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं एक नोड लूंगा, इसका नाम हेड नहीं, रूट बताऊंगा, and I'll mark it as node, and I'll give root dot value as 1, ठीक है? I can initialize it using constructor as well, you know how, correct guys? पता है ना, है ना? तो मैं आपसे वैसे करने वाला, root left equals to node, and I'll be putting 2 here. 2 is went into the data. Same way I'll be doing it. Right equals to new node of 3, ठीक है? अभी मैं ऐसे लिखूंगा, root dot left is equals to left, root dot right is equals to right. Any objections, guys? Any objections? Just by using these 5 statements, I've created this tree. Agreed? अब बताओ, if I create one, if I want to put one more node, तो मैं क्या करूंगा? इसका नाम कुछ नाम दूंगा, temp is equals to new node which is having the value 4, ठीक है? अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? I can either do left dot left, ये चीज कर सकता हूँ, but what I'll be doing is root dot left is equals to temp. Agreed? हेलो, मैं ये सब एलिमिनेट कर दूंगा, अभी देखो और सिंपल करूंगा, राइट? सो दिस इज अ मैनुअल वे, आई नेवर टीच दिस थिंग, बट लाइक यू माइट बी गाइस बी हैविंग की प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोग को कि ये क्या पढ़ा रहा है सर, मतलब पता ही नहीं कैसे बनाता है, और बोल रहे क्वेश्चंस करेंगे। टू डू दैट आई टीच एन ऑटोमेटेड वे लेटर, ठीक है? अभी रुको, सी, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू न्यू नोड 2, root dot right equals to new node 3, root dot left इसका लेफ्ट पे आया, इस रेफरेंस से लेफ्ट पे ले गया, इट इज न्यू डॉट 4। डोंट यू थिंक ये और ये दोनों सेम है?
correct? So देखो guys, what I'm doing, ठीक है? In this node, what we have value, देखो value, we have left, we have right, correct? I explained you how this thing is structured, right? It is int data, it is node left, it is node right, right? So root dot left कर रहा हूँ, like it is a variable, reference variable, right? I have created a node and putting it directly into that reference variable, correct? Same thing, I'm creating a node and putting it into that reference variable directly, right? And I'm creating a node and I'm putting it into root dot left, मतलब इसका left a new node, इसका reference का इसका memory I'm putting it into that reference variable. Are you getting? Like this is a manual way, manually मैं steps लिख रहा हूँ to create a tree. Agreed? इसको मैं automate करूंगा loops में डाल के, but not now, ठीक है? In 2 classes. हाँ, you can't अरुंधति, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं मैनुअल बोल रहा हूँ, ठीक है? ऑटोमेटेड वे बाद में देखेंगे, राइट? बिकॉज ऑटोमेट करने के लिए वी नीड सम टेक्निक, राइट? आई मीन वी नीड समथिंग दैट इज वेरी रिपीटेटिंग, राइट? यहाँ पे कुछ भी रिपीटेटिंग नहीं है, तो आई कांट डू दैट, करेक्ट? root dot left is the reference variable of the node type, correct? ठीक है guys, I wanted to teach traversals. Okay, let's take a break in that case. 10 हो गया, we'll be back at 10:20, ठीक है? 10:21, ठीक है? We can have the traversals by then. तब तक कुछ और डाउट्स है, do let me know, ठीक है? कुछ भी और डाउट है, do let me know, ठीक है? So we'll come back and we'll solve these things. We'll do the class, ठीक है? And last half an hour में we'll discuss one of the any question and then we can just skip it, ठीक है? ठीक है guys, चलो, I'll be there.
हेलो हेलो गाइस, हाय 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 हाय, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। लेट्स कंटिन्यू। क्या मतलब है इसका? 3 मॉड्यूल 3 इमोशन स्कूल, क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? आई डिडंट गेट यू। ठीक है गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद आवर। ठीक है, so let's continue with this. This thing is completely out of the box. This is never asked, but I'm just saying ki how you can create a tree in a manual way. ठीक है, so this is how a node will be present. One data variable and then two reference variables which are pointed to two different nodes, right? So this is about the tree. Now let's talk about something else, right? So how does a so again, like I didn't tell one more thing. कि जैसे यहाँ पे you're going to have a node, right? How does a tree class is going to look like? It is going to look like something like this. Class binary tree, and then you'll be having a reference variable of a root, and then like this is the most thing, and you'll be having a constructor that is giving the node. So this will be taking a key and root एक बनाओगे जिसमें की जाने वाला है, right? So this is how a class is going to be. We'll discuss this later. Okay? Right now, what I am trying to say is कि every binary tree has a variable root in it. Do you guys agree with this? और उसके आगे root के आगे क्या क्या होगा वो root में होगा, ठीक है? But this is how the class is going to be. Guys, shall I move forward? ठीक है? So I'm going to teach you guys the traversals. How do we move in a tree? Shall I move forward? I need some more confirmation. एक बंदे से नहीं. Node left and node right का तो क्लास भी तो क्लास होगा इन क्लास. नो, रूट नोड लेफ्ट और राइट वो सब तो इसके अंदर होगा ना, इस पर्टिकुलर रूट के अंदर होगा ना. लाइक वंस यू एक्सेस रूट डॉट लेफ्ट then you're getting a reference to the left, right? We'll see this, don't worry, we'll see this. Right now I just want to focus on traversals. So what does a traversal mean? Traversal का मतलब है कि जैसे in a linked list you will be moving it, right? You're traversing a linked list. क्या मतलब है इसका? मतलब you're moving through the linked list. Agreed? Iterating, yeah, so that you can print the values, you can search for the values, correct? So you know how to do it. You'll just use a while loop in case of traversal, right? But यहाँ पे हमारे trees में इतना straight forward नहीं है, correct? अगर समझ लो ये 4 है, ये 5 है, this is a tree, for example, this is a tree. How do you move in this tree? मतलब पहले यहाँ पे आओगे तो पीछे नहीं जा सकते हो, कुछ तो होगा ना. Like how do you move? How do you consider कि I should go first here and then the other node? How do you make that distinction is my question, right? So I'll tell you, let me tell you the types of traversals for now. Okay, there are two types of traversals. Okay, one is DFS, other one is BFS. ठीक है, क्या मतलब है DFS का? ठीक है, DFS का मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च. BFS का मतलब है ब्रेथ फर्स्ट सर्च. I'll tell you what does these things mean exactly. Calm down, बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? बस याद रखो there are two types of traversals, ठीक है? And depth first search ये बोलता है कि you should traverse the whole depth first before you explore other nodes, ठीक है? So
in depth first search you have three types of traversals. Okay, one is pre-order traversal, the other one is in-order traversal, the other one is post-order traversal. Okay. Okay, don't worry. Mohit will tell you that. Don't worry. Anything else? Shall I move forward? I didn't tell anything. I'll tell you. Okay. Like, is there anything else that you feel that there's a hole in your mind? Okay, let me know. Okay, I'm just dividing the number of ways. Okay, I'll tell you how each step varies. Okay, so let's talk about pre-order first. Okay, so in pre-order, what pre-order says is key pre-order. Okay, all these three are just the ways of the types of ordering in which you traverse. Okay, all the three are same in a way that they first traverse the whole depth and then they will be moving ahead. Okay, but it's all about the order. Okay, kya order hai? Okay, pre-order. It means that pre-order. It means that you will be traversing something pre to something, right? So इसका मतलब ये है कि you will be traversing route first. Right, you will be traversing the route first, okay, and then left and then right. So guys, these are the three things, right? So if you have a tree like this has a root, correct? So agar samajh lo bahut chota tree hai, 1 pointing to 2 and this is pointing to 3, you are given a root. Okay, so if at all, what are the types of traversals we can have? Okay, one traversal is this. Okay, one traversal is this. One traversal is this. One traversal is this. One traversal is this. देखो 6 बन गया. So just search for a small, for a small tree, there are 6 types of traversals. Do you guys agree? Correct? There are these types of traversals. That is the reason we bifurcated everything and we removed certain things. Okay, I'll tell you what did we remove. Okay, so these are the 3 attributes. Okay, एक रूट है, एक लेफ्ट है, एक राइट है. ठीक है, लेफ्ट आगे हो सकता है, रूट बीच में हो सकता है, उसके बाद राइट आ सकता है, राइट? तो या लेफ्ट पहले, उसके बाद राइट, उसके बाद रूट, राइट? इन दैट वे यू हैव 6 नंबर, 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज. डू यू गाइस एग्री? मतलब यहाँ पे ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 1. देयर आर 6 कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल. यू कैन सी 6 कॉम्बिनेशंस. हेलो, I'll tell you, Ankit, just wait. मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. But do you guys agree that 6 types of traversals hai? Hello? Right. So what is that? That is, first one is, as I told, root, left and right. है ना? That is one. उसके बाद root, right and left. ठीक है? उसके बाद left, root and right. ठीक है? उसके बाद left, right and root. ठीक है? And उसके बाद right, root and left. उसके बाद right, left and root. ठीक है? These are 6 combinations. But what we did is कि we have made ourselves sure कि कभी भी we won't traverse right over left. ठीक है? मतलब देखो, इसमें we are traversing right, so we'll cancel this. यहाँ पे right is being traversed before left, so we'll cancel this. And another one this. ठीक है? So only there are 3 types of traversals that are left. ठीक है? One is root and then left and then right. The other one is left को पहले traverse करो, उसके बाद root, उसके बाद right, उसके बाद left traverse करो, right traverse करो and then root. Only these 3 types of ordering is what left at the end. ठीक है? So the first combination is what pre-order is. कि first you'll be traversing root and then you'll be traversing left and then you'll be traversing right. So we are removing these 3 because they are like we don't want so many things. We don't want to name so many things. ठीक है? So it is quite intuitive that कि left जो है वो पहले दिखना चाहिए. So anyway, it will give the same thing. ठीक है? इसको और इसको like functional wise it won't make any difference. ठीक है? Which you will be learning in future. ठीक है? So see this. So this is called pre-order. In pre-order, root is the first thing that will be traversed.
ठीक है, उसके बाद लेफ्ट विल बी ट्रैवर्स्ड, उसके बाद राइट विल बी ट्रैवर्स्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्री, ठीक है। So in this particular tree, according to our pre-order traversal, I should be traversing root first. मतलब traversal, अगर if I start to list the traversal, it is going to be 1 because root. Guys, do you agree? You'll understand that. Wait, just wait. ठीक है, उसके बाद लेफ्ट ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेफ्ट मींस नॉट जस्ट द लेफ्ट नोड, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द लेफ्ट नोड, ठीक है, इट इज द लेफ्ट सब ट्री दैट यू शुड बी ट्रैवर्सिंग, ठीक है। सो व्हेन यू रीच हियर, ठीक है, you are traverse 1, ठीक है, you need to traverse this subtree first, next, and then you should be traversing right subtree. That is what pre-order traversal means, ठीक है। So when you're traversing the left subtree, ठीक है, then like how do we traverse a left subtree, ठीक है, again you recursively you'll be calling pre-order, ठीक है। So now you're only focused on traversing this tree. Again, you just see this, you'll be traversing root first, and then left, that is 4, and then right, that is 5, ठीक है। Now this subtree got traversed. Now coming back to this, you'll be like root traverse हो गया 1, उसके बाद left got traversed, this is left, and then right will be traversed, that is 3. This is root. Do you guys agree with this statement? So this is what exactly we were telling, that key trees are recursive in nature, right? So if you just touch any of its child, you're touching a tree actually, you're touching its subtree, okay? So whatever operation is happening here, you should complete that operation in that subtree as well. So that is what recursion means. तो देखो एक बार, तुम जिस तरह से बोला रूट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, लेफ्ट रूट है, लेफ्ट है, राइट है, लेकिन इस रूट, if you look at it in its left subtree, you can see that this is a root itself, and this is the left subtree, and this is the right subtree as well. Do you guys agree with the statement? This thing as a whole is a left subtree, but recursively also, this is the root, this is the left, and this is the right. यहाँ पे one element है, तो this is a root only be there, left and right null है, इसलिए they are not present. Guys, is this clear? I just want to trigger a poll. Let me create a poll quickly, and I'll be triggering it. What is this man? Okay, cool. पता नहीं what's happening. ठीक है, we'll see that. ठीक है. Just raise the hands to the people who didn't understand. Clear नहीं है किसको. ठीक है. Sakshi, you want to get unmuted? Is that fine for you? हाँ, I'll tell you that, Chirag. I'll tell you. ठीक है. We'll do more complicated traversals. Just wait. We'll do more complicated traversals. Just wait. ठीक है. So just wait. I'll do one more traversal, and then it might be clear. ठीक है. So just wait for me. ठीक है. You have the same tree again, because this is like simply understanding. ठीक है. तो अब देखो एक बार. Let's talk about in order traversal. In order में you'll be traversing left first. उसके बाद root in order, in बीच में in है ना. उसके बाद left, उसके बाद root, उसके बाद right. Correct? So this is in order traversal, right? So let me do that. The traversal कैसे होने वाला है? पहले left होगा, है ना? मतलब one will not be there, right? तो left को traverse करना होगा. चलो left पे चलते हैं, ठीक है? तो again recursively also this will be true, ठीक है? वापस यहाँ पे आया, again इसको भी in order traversal करना होगा. So again you'll go to left, ठीक है? You are here, ठीक है? Again you should go to left, ठीक है? Because left, root, right. Left is nothing, null. Okay, now root will be printed, that is 4, and then right is also null, so this will be done, right? Now left is done for this subtree, left is done, so 2 will be printed because root. Uske baad right will be printed, that is 5.
तो 5 प्रिंट होने में भी लेफ्ट राइट होता है, which are none, so it's good. Now this whole subtree is being traversed, right? Now left is done for this particular call, so 1 will be printed, that is the root. उसके बाद right will be printed, that is 3. Now look at the beauty. This is left, this is root, and this is right. Correct? Left, root, right. In left, inside, internally, left also, you can see that this is left, this is root, and this is right. है ना? So every time देखो left पे जाते ही you should be viewing it as a subtree, है ना? पहले ये subtree को पूरा ट्रैवर्स करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, राइट? तो उस subtree को ट्रैवर्स करने के लिए वापस सेम फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट रूट राइट, यही चलता रहेगा इंटरनली और आगे जाओ, दैट सेम विल हैपन. अब okay, I'll repeat this with another example. Okay, so let's take another example, like some example like 1, 3, 2, some answers like 5, 4, 7, 8. Okay, some value like 9, some value like 10. Okay, cool. This is kind of weird, right? So let's talk about pre-order. Pre-order में क्या है? पहले root होगा, उसके बाद left होगा, उसके बाद right होगा. Correct? What is the root now? So you are at here, you are calling the root. So root will be 1, right? उसके बाद you are calling for left. मतलब left मतलब the whole subtree. Correct? So in this subtree also you will be calling it as a tree. So again, internally also you will be performing the pre-order transfer. So again the root will be printed, that is 3. And then left will be printed, that is 5. Right? And then right will be printed. Again, this is a tree again, right? So again, root, left, right is none, so nothing. So right is done. So for this call, right, left is done, root is done, right is done. So this subtree is done as a whole. So you'll come out and you can see that root ho gaya, left ho gaya, and then right pe jana hoga. You'll go to right. Again, when you are here, again, you'll be printing root, correct? But left, now you'll be going to left, that is 7. Then you'll go to right. Right is also a subtree, right? So yahan pe you'll be going for root again. You'll be going to left, right? And then you can see that this is done. I mean, root is done, left is done, right is done. So this thing as a whole is done, right? And root, left, right, everything is done. So you'll close it. So now see, this is root. This whole thing is left. This whole thing is right. So if you view even depth, like recursively kaise kaam kar raha hai, even then you'll see that this is root, right? And you'll find out that this is left, and this thing as a whole is right. Root, left, right. And again, this guy is also subtree, right? So यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे root है और left है, लेकिन right नहीं है because right node is nothing, correct? So this is how it is. Same thing goes here, right? It is a root. This is left, and this is right. Internally, this will be the root, and this will be the left. Guys, if 5 has a child on its right, let's do that. Okay, so let's take another example where 5 is having a root on its child. Okay, let me remove all these things and let me create the same tree. Let me just create a smaller tree without this thing, and let me just print it. So if 5 is having a child like 7 here, and if 4 is having a child here, and 4 is having a child like 10 here, and this guy is having nothing, it is having a 5. Okay, अब देखो root 1, left, right? This is left. Left में भी root will be printed first. Okay, and then left, that is this guy, correct? Now left में you'll be see root print होगा पहले. Left is nothing, so
you won't print left. Right is 7, correct? So you'll print 7. You can see that left is done, root is done. Now you'll go for right, that is 4, and then you'll go for left of it. Okay, that is 10. Okay, you can see that the whole left subarray is been traversed. How? How? Because this is the root, and this is the left subtree, and this is the right subtree. इसके बाद 5 होगा. That is right. So just see this thing, guys. Pehle you'll go to root, and then you'll go to left, and recursively you'll keep on going down and down and down. For each subarray, you'll be calling the same way the pre-order is structured. So this is what recursive. It is very recursive. सर एक क्वेश्चन है, ये 2 बार प्रिंट नहीं हो जाएगा, लाइक राइट एंड लेफ्ट का रूट है ये. आई डिडंट गेट यू मुबारक, आई डिडंट गेट यू, लाइक व्हाट यू मीन बाय 2 बार प्रिंट हो जाएगा? सी यू आर प्रिंटिंग रूट एंड यू आर प्रिंटिंग लेफ्ट वाला सबट्री, एंड देन यू आर प्रिंटिंग राइट वाला सबट्री ना. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? So it's like a recursion, guys. It's like a recursion where you'll print one root, okay, and then you'll call the same function, this print order printing function on the left subtree, where you'll call the same function to print the print order in the right subtree. Are you guys getting it? Am I visiting more than once? No, I'm not visiting. Like I'm not visiting ka matlab I'm printing, right? I'm not printing any value more than once. Okay, I'm just visiting every value once. Okay, I'll tell you the implementation, but before that, it should be sure that you guys understood how am I traversing. That is the most important thing. Okay, think of it in a recursive fashion, correct? Okay, so we can do in order as well. Okay, in order के लिए कैसे करेंगे? Just see this. Some values like 5 है यहाँ पे. For example, यहाँ पे let's assume we have some values like 6. Let's assume we have 7. Let's assume this guy like this guy has some 8. Let's stop here. Okay, so this is a simple one. Okay, in order में क्या है? In order में you will be doing root नहीं करेंगे पहले. You will be going for left first, and then the root, and then the right. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट सब ट्री पे जब कॉल करोगे, you'll be calling the same in order function again internally as well. तो लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करो, राइट? तो when you are printing, you won't print first one, you will be going for left. तो इसका लेफ्ट पे आया, यहाँ पे है ना, अगेन लेफ्ट पे आया, राइट? बिकॉज आई कांट प्रिंट दिस, राइट? आई एम हियर. अगेन लेफ्ट पे आया, आई एम हियर, राइट? नाउ अगेन लेफ्ट पे जाऊंगा, लेफ्ट इज नल, सो आई वोंट डू एनीथिंग. एंड देन आई विल कम टू रूट. ठीक है, रूट के लिए आया, then I'll print root, then I'll go to right. Right is null, so this is how the single element is printed always. So now you can see that this will be going back, right? This recursion call will go back, and for this recursion call you can see that left is completed, right? So root will be printed, right? And then same thing for right, it will be calling, right? Again right will be printed as 4. You can see that this particular thing is also done, right? So this is also done, you'll go back again, right? Now at this point you can see that left is done completely. So for this guy, left subtree is done. For this particular call, left subtree is done, so 2 will be printed. Then right will be called. You can call right here, and यहाँ पे भी it will call left again because it's a subtree as well. So left पे you'll be having 8, right? And then you are having the root, and then you don't have anything, so you won't do anything, right? So यहाँ पे देखो, left is done, root is done, right is also done, so this whole subarray is done, right? So you'll go back again. So you are at this position where you have called the left part and the left is done. Now you'll be printing the root, and then you'll be printing the right. Just see this thing. This is root, this is right, and this whole thing is left, right? In this left subtree, okay, you can see that this is root, and these guys are right, and these guys are left.
Are you guys able to see? Again, internally also this is root and this is left and this is right. So internally also it will be recursively calling the same pattern. Yes, we should be implementing it using recursion. Yes. Mubarak, you wanna get unmuted? एक बार बता दो. I'll be unmuting. Explain 2-8 position. देखो यार 2-8 position में कुछ नहीं है, ठीक है? You are empty here, right? So देखो यहाँ पे like left is done. So you will be going and printing the root. उसके बाद right को print करना है ना? So right is again a subtree, right? So in this subtree again you can't directly print its root. You should print its left root first. So you'll be going to the left part, that is 8, right? So you'll be printing 8 and then you'll be printing 5 as well. Because 5 is the root. So this is the root and this is the left. So right is done, right? So whole left part is done. Right? So guys, post order, I'm leaving it for you guys to do it. But did you guys understand? Did you guys get the feel of DFS? What does DFS mean? DFS means that depth first search. You'll go the whole depth. You can see that pura depth complete करने के बाद you're coming out in this way. So you can write it in this way. Just see this. Let me erase all these things. You can just see how you're calling the depth. You're going here, you're going here, you are here, then it will be reversed. Okay. Then you are going again into the depth. Okay. And then you're going here, and then you're going here. Again, you're traversing all the depth first, and then you're coming to top, and again you're going to the depth. See, you're basically focused on the depth. Okay. Pura depth jao, uske baad hi upar aao. Right. So that is the reason of, that is the meaning of depth first search. So pre-order, post-order, and in order, all the three are depth first search because they are focused much on the depth. Correct? Pura depth traverse hone ke baad hi they are coming up. Do you guys agree with that thing? Hello? Right. So that is about previous pre-order, in order, and post-order depth. Okay. The standard logic remains the same, guys. You are supposedly, you guys are pehle, like what, based on the traversal you're taking up, you'll be traversing the left subtree first. If at all it's just one node, you'll be traversing that. Okay. But it's the whole subtree that you're going to traverse. So internally also you'll be following the same logic. Left, root, right. वो जब खत्म होगा, then you'll come out. ठीक है. Now try for something. ठीक है. Try for, like, I'll give you one value. ठीक है. I'll give you one tree. जिनको समझ नहीं आ रहा, can you guys try it? एक बार सोचो इसके बारे में कैसे काम कर रहा है. Right. 5 will be here, and then you can call it as left, and then you can call it as. Just tell me for this particular tree, what will be the in order? What is it? What is the pre-order and what is the in order? पोस्ट ऑर्डर भी कर सकता हूँ, बट जस्ट टेक दैट एज एन एग्जांपल. ठीक है, क्योंकि वहां पे रूट को पहले नहीं करना, पहले लेफ्ट और राइट खत्म होने के बाद रूट करना है. तो तुम लोग एक बार सोच, जिनको समझ नहीं आ रहा, लाइक अभी भी किसको समझ नहीं आ रहा, जस्ट रेज योर हैंड. आई एक्सप्लेन यू पर्सनली. ठीक है, जिससे तुम लोग को समझ में आएगा. कैन यू गाइस डू दैट? अभी भी कोई है जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है? इफ यू गाइस हैव दैट थिंग ऑन योर माइंड, डू दैट थिंग. कैन यू गाइस टेल मी? देखो मेरे को करने तो प्री ऑर्डर. ठीक है, प्री ऑर्डर में रूट पहले होगा. ठीक है, तो 1 प्रिंट करने तो मुझे. उसके बाद लेफ्ट. ठीक है, अगेन लेफ्ट में भी रूट पहले होगा. राइट, उसके बाद लेफ्ट अगेन. ठीक है, लेफ्ट में भी रूट पहले होगा. उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद रूट लेफ्ट, उसके बाद राइट ना, दैट इज दिस. तो इसका पूरा लेफ्ट हो गया. राइट,
नाउ इसका राइट होना चाहिए, राइट इज नथिंग बट नल, राइट? सो आई वोंट डू दिस. सो लेफ्ट इज डन कंप्लीटली, यू आर एट दिस पोजिशन. रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, नाउ राइट पे आऊंगा मैं. दिस इज ऑल्सो सब ट्री, ठीक है? यहाँ पे भी लाइक रूट पहले प्रिंट होगा, उसके बाद लेफ्ट होगा, करेक्ट? बिकॉज प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट एंड देन राइट. राइट यहाँ पे है नहीं, तो यू वोंट प्रिंट दैट. So this will be written. So whole tree has been traversed. So that is pre-order. Any doubts in this? Guys, in order को एक बार देख लेते हैं. In order में क्या है? इसको pre-order को you can write it as R N L R. N मतलब node मतलब root. Node left right. ठीक है? In order को you can write it as L N R. ठीक है? मतलब left node and then right. ठीक है? तो यहाँ पे I want print 1. ठीक है? पहले लेफ्ट पूरा ट्रावर्स करूंगा. अगेन द सेम थिंग, आई वांट प्रिंट दिस वैल्यू पूरा लेफ्ट यहाँ पे आया, राइट? दिस द ओनली नोड, क्योंकि लेफ्ट नहीं है एंड नोड विल प्रिंट होगा, फिर राइट पे नहीं है, सो आई विल बी राइट प्रिंटिंग दिस थिंग. यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर कॉल यू कैन सी दैट लेफ्ट इज बीन प्रिंटेड. नाउ आई शुड प्रिंट दिस 4 एंड देन आई शुड प्रिंट दिस राइट एज वेल. तो ये पूरा लेफ्ट खत्म हो गया. सो नाउ आई विल बी टेकिंग अप दिस इन ऑर्डर. सो देखो ये लेफ्ट पूरा खत्म हो गया, उसके बाद आई एम प्रिंटिंग दिस एन, करेक्ट? राइट कुछ है नहीं, सो आई लीव इट. द होल लेफ्ट इज डन. नाउ आई विल प्रिंट 1 बिकॉज़ लेफ्ट इज डन, उसके बाद एन आएगा ना. उसके बाद नाउ अगेन राइट में अगेन इट इज द सब ट्री, करेक्ट? सो अगेन द सेम फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट नोड एंड देन राइट. सो लेफ्ट इज 5 एंड देन नोड इज 3, राइट कुछ है नहीं, सो लीव इट. So now it is done. You can see that this is root, this is right, and this is left. So think of it in a recursive way. ठीक है? जब तक मैं इंटरनल छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा, ऊपर वाले में जाऊंगा नहीं. ऐसे सोचो तुम लोग. डाउट्स है किसी को? हेलो यार, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. आई कांट एक्चुअली रीड योर माइंड. ठीक है? डीएफएस ओके, नो डाउट ना? सो शिबान एक बार हैंड रेज करो, देन आई विल अनम्यूट यू मैम. हेलो सर. हाय. सर ये मेरा क्वेश्चन ये था सर, ये इन ऑर्डर सर, वो जो आपने एग्जाम अभी क्वेश्चन दे रखा था अपन लोग निकाले थे जिसमें. हाँ सर वो स्लाइड पर आइए सर, स्लाइड पर आइए, वो पीछे जो था. आता. Let me एक सेकंड रुको. So this in BFS there's only one type of traversal, guys, that is level order, which will be coming back. ठीक है? Which will be learning after Mohammed Shabir. Okay, बताओ ब्रो. हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, ये 3 में सर ये लेफ्ट जुड़ा हुआ है 5 एज अ लेफ्ट. हाँ, एज अ लेफ्ट नोड सर. अगर हाँ सर, अगर 3 में ये एज अ राइट जुड़ा हुआ था 5. आई एम सॉरी, एक सेकंड, लेट मी सी दिस. हाँ आप बताओ सर. ये अपन लोग ने करेक्ट किया है सर. मेरा क्वेश्चन था, अगर ये 5 अगर राइट होता, राइट नोड होती 3 की, तो भी अगर इन ऑर्डर सेम होता. चलो नहीं एक बार देख लेते हैं ना. तो ठीक है, तो मुझे रूट हो गया, उसके बाद राइट ट्रैवर्स करना है, करेक्ट? तो राइट में क्या है? लेफ्ट होगा, उसके बाद नोड होगा, उसके बाद राइट होगा, करेक्ट? सो लेफ्ट में कुछ है नहीं, ठीक है? तो कुछ नहीं प्रिंट होगा. अब नोड प्रिंट होगा, मतलब 3 प्रिंट होगा पहले, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा. यस सर. समझा? यस सर, समझ गया. यही क्वेश्चन. सेम फॉर्मूला इंटरनली छोटे ट्री स्केल पे अप्लाई होगा. ठीक है? ओके तो उसके बाद ऊपर आते रहोगे. ठीक है? आई टीच यू. ठीक है? डोंट वरी. अभी मैं एक बार प्रॉपर्ली कोड कर दूंगा, तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ा पेशेंस रखो. ठीक है? ठीक है सर. एक और चीज सर, छोटी सी चीज थी सर. वो पिछले स्लाइड पे सर आपने बताया था कि 6 पैटर्न बन रहे हैं अगर स्टार्टिंग में. हाँ सर, ये पैटर्न का यूज तो मतलब अपन लोग ने किया नहीं है. नहीं पैटर्न नहीं बोल रहा हूँ मैं बस बेसिकली बोल रहा हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ways you can print, मतलब in which order you can print. So I listed out that there are 3 attributes. ठीक है? इन बाइनरी है ना, बाइनरी ट्री में 3 attributes है. एक तो तुम लेफ्ट सब ट्री को पहले प्रिंट करो, उसके बाद खुद को प्रिंट हो जाओ, उसके बाद राइट सब ट्री को प्रिंट करो, राइट? दैट इज दिस वन, राइट? वरना आई जस्ट लिस्टेड कि कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं एंड आई फाउंड दैट 6 है इसमें, राइट? एंड व्हाट आई जस्ट डिड इज कि आई लाइक इसमें से ओनली लेफ्ट और राइट को स्वैप करके बहुत सारी चीजें, सो आई जस्ट रिमूव देम and I just call this as pre-order. I just call this as in order. I'm just calling this as post order. बस यही समझाने के लिए I just pull this thing. Okay sir.
Thank you. Okay. So now just see this. You have some. You have another traversal that is breadth first search, that is called level order traversal. Like this is far. This is very easy. Okay. Let me teach you this. Okay. You have a tree like this. Guys, are you there? Hello. ठीक है. तो देखो, like level order traversal ये है कि by level you will be doing. ठीक है. By each level, this is one level. Level 0 you can call it. Level 1 you can call it. By level 2 you can call it, right? इसमें भी left पहले आएगा, right? So you will be calling this first, मतलब 1. उसके बाद you will be calling this, that is 2, 3, and then you will be calling this, that is 4, 5. This is level order traversal. अगर यहाँ पे 6 है, तो 6 आएगा यहाँ पे. करेक्ट रोहन, करेक्ट. प्री मतलब देखिए ऐसे बोलते हैं ना, प्री इंडिपेंडेंस एरा. प्री इंडिपेंडेंट एरा मतलब लाइक बिफोर 1945, राइट? बिफोर 1947, सॉरी, राइट? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट? तो वैसे प्री ऑर्डर मतलब बिफोर लेफ्ट एंड राइट, प्रीली यू विल बी ट्रैवर्सिंग रूट, है ना? पोस्ट मतलब लेफ्ट और राइट होने के बाद. इन मतलब दोनों के बीच में. बस ये डिफरेंस है. Cool, guys. Right. So देखो guys, level order traversal is a breadth first search. See, you're going to the breadth first, right? मतलब पूरा breadth खत्म करो, उसके बाद next breadth पे जाओ, उसके बाद next breadth पे जाओ. अगर यहाँ पे 7 है, then you'll be printing 7 here. यहाँ पे some other value 8 है, यहाँ पे some other value 9 है, यहाँ पे एक और value 10 है, right? You'll be printing 8, 9 and 10. You are just traversing in this way. This is called level order traversal. And you're going by depth. ठीक है, मतलब you're going by breadth. ठीक है, पूरा breadth को cover करके पहले कर रहे हो. उसमें क्या है, you're going to the depth first. पूरा depth खत्म होने के बाद तुम ऊपर आ रहे हो, right? So you're seeing every depth and then you're coming back up. But यहाँ पे it is little different. Do you guys agree with this statement? Hello? So this is breadth first search. Okay. So let me just teach you how to code this thing. ठीक है. तो अगर मैं एक बार कोड समझा दिया ना, then it will be much easier for you guys to realize what is going on. ठीक है. ठीक है. So अब तक I am hoping everyone is understanding whatever I am teaching. ठीक है. Now अब मैं एक फंक्शन लिखने के लिए कोई बोला मुझे, ठीक है, कोई बोलेगा कि bro can you write a function, ठीक है, which can print, ठीक है, a tree in a pre-order traversal. Can you do that? So that is my question, right? So I told you pre-order मतलब क्या है? Pre-order में N L R आएगा, मतलब node left right, correct? This is the way. ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे लिख लिया. Now think, कोई मेरे से पूछा कि I should be printing the tree या I should be adding the nodes in the list according to the pre-order traversal. ठीक है guys, ठीक है. So what I can do is I'll be creating a pre-order function. ठीक है. This will just take a root, है ना? It will take a node root, क्योंकि root लेना जरूरी है, right? This guy won't return anything because we are just printing. ठीक है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि pre-order में क्या होता है? First, the root value should be printed. Do you guys agree? So I'll just write system.out.println root.value. Agree करते हो? हेलो, मुझे पहले 1 प्रिंट करना है ना. देखो 1 प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे लेफ्ट पे जाना होगा, उसके बाद मुझे जब लेफ्ट खत्म होगा उसके बाद राइट पे जाना होगा. So let me just print this value first. Correct? Is this statement correct, guys? अब देखो, I need to go to left. तो लेफ्ट ऐसे नहीं जा सकता. I can't do like root.left.value print करो, ऐसे can't do, right? I should be going it as if I'm performing pre-order
in this guy also. Do you guys agree? मतलब इस पर्टिकुलर सब ट्री में भी मैं जैसे प्री ऑर्डर कर रहा हूं वैसे ही करना चाहिए. तो आई शुड बी कॉलिंग द सेम फंक्शन on this subtree. Don't you guys agree? Correct. So let me just call preorder root dot left, because मैं लेफ्ट नोड का जो रूट है उसको मैं प्रीऑर्डर करना चाहता हूँ. वो कैसे होगा? दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. ठीक है. सो लेट मी टेल यू अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रिकर्शन. ठीक है. सो रिकर्शन का, इफ समवन आस्क्स यू कि हाउ डू यू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है. तो रिकर्सिव का बस ऐसे समझो कि रिकर्शन अगर एफ ऑफ एन है, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्मॉलर प्रॉब्लम देन दिस. ठीक है. तो रिकर्शन का मैं सिंपल आइडिया बताता हूँ. ठीक है. समवन आस्क्ड यू टू कैलकुलेट n नेचुरल नंबर्स. लिसन टू मी केयरफुली, डोंट राइट एनीथिंग. n नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करने बोला. ठीक है. तो आई विल बी थिंकिंग कि व्हाट इज द स्मॉलर प्रॉब्लम ऑफ दिस. व्हाट इज द स्मॉलर प्रॉब्लम. मतलब n नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करने बोला, तो इस प्रॉब्लम को मैं छोटा प्रॉब्लम कर दूंगा. ठीक है. आई टोल्ड यू राइट, लाइक आई एम नॉट श्योर कि मॉड्यूल 1 में ये चीज बोला गया कि नहीं, कि अगर एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, you will just recursion में you will just break that problem into smaller problems. ठीक है. and you assume, ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम के लिए जो फंक्शन कॉल किया था, ठीक है, you assume that ये फंक्शन काम करेगा for the smaller problems. You should be creating a smaller problem in such a way that they will work for the same, right? and they are working. तो you just need to think of one step. एक स्टेप के बारे में सोचो कि ये छोटा प्रॉब्लम्स को मिलाकर बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा. Assume that this function is working and this function will give you the result of the smaller problems. लेकिन how do you combine that smaller problems to find the solution of larger problem is the only question. समझ लो, जैसे मैं बताऊं n नेचुरल नंबर्स का बनाने के लिए बोला कोई, एक फंक्शन दो जो n लेगा और n नेचुरल नंबर्स का सम बता देगा, राइट? सो you can do it, but let me do it forcefully using recursion. ठीक है. तो मैं सोचूंगा इसका स्मॉलर प्रॉब्लम क्या होगा, f of n minus 1. मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि हाउ दिस थिंग इज वर्किंग. मैं सोचूंगा ही नहीं कैसे काम कर रहा है. मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये काम कर रहा है, राइट? बस सोचो, जस्ट कीप ट्रस्ट इन इट कि वो काम करेगा. बस तुम ये जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग कि एक स्टेप क्या होने वाला है टू लाइक अगर ये काम किएगा तो इसको और इसके बीच में जो लिंक है ना वो बनाना है तुम्हें. बस you just need to create that link. How can you use this solution to form your bigger solution? ठीक है. मैं बताऊंगा कि कुछ नहीं यार, प्लस एन कर दो, वही तो आंसर है. तो f of n इक्वल्स टू प्लस एन. मतलब f of n इज नथिंग बट n प्लस f of n minus 1. यही तो आंसर है, राइट? सो यू जस्ट assume कि this is working. ठीक है, this is working. You just need to just concatenate one step. एक recurrence relation बनाओ कि कैसे काम कर रहा है. तुम देखो ये बंदा क्या करेगा, ये भी सोचेगा अरे मेरे को भी नहीं पता भाई कैसे करता है, मैं तो इसका छोटा भाई के मतलब आई विल बी जस्ट कॉलिंग अ स्मॉलर फंक्शन ऑफ दिस. तो ये बंदा बोलेगा अरे मुझे भी नहीं पता कैसे कॉल करना है, आई विल आल्सो कॉल अ स्मॉलर गाय. ठीक है. वैसे वैसे करके लाइक इट विल फॉर्म अ रिएक्शन टिल यू रीच द बेस केस. तुम्हें बेस केस लिखना पड़ेगा बस. इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न 0. तो सब ऐसे ऐड होके वापस आ जाएंगे, यू विल बी रीचिंग द आंसर. So that is how it works. The recursion is a beauty, man. Recursion is सही में मैजिक है, राइट? तुम बस assume करो ये काम कर रहा है, बस काम कर रहा है. कैसे काम कर रहा है मेरे से मत पूछ, बस मुझे वो कनेक्ट वाला स्टेप चाहिए. कनेक्ट कैसे करूंगा छोटा सॉल्यूशन को और बड़ा सॉल्यूशन, बस. राइट? सो जस्ट assume कि दिस प्रीऑर्डर इज वर्किंग. अब मैं इंटरनली बाद में सोचूंगा, पहले मैं कनेक्ट करूंगा कि ये काम कर रहा है, तो इसको यूज करके मैं इसको कैसे बनाऊं. तो वो कुछ नहीं है. अगर ये काम कर रहा है, लेफ्ट वाला सब प्रिंट हो गया, ठीक है, तो मुझे बस उसके पहले रूट प्रिंट करना होगा और उसके बाद में रूट डॉट राइट प्रिंट करना होगा. आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट इज वर्किंग. बस हो गया. लाइक दिस इज द कोड. बट आई टोल्ड यू राइट, बेस केस भी होना जरूरी है. ठीक है. तो 3 स्टेप होता है रिकर्शन में. एक बेस केस होगा,
जो तुम्हें लिखना ही लिखना है. दूसरा चीज की रिकरेंस रिलेशन between smaller problems and the current problem. And the third case is basically and the third thing is identifying कि same problem for a smaller मतलब same input मतलब same function need to be called for a smaller problem of the same genre. देखो मैं इस सब ट्री के लिए कॉल करना चाहता हूँ, मैं इस सब ट्री के लिए कॉल करना चाहता हूँ, राइट. सो वैसे वैसे इवन दिस गाय विल बी प्रिंटिंग इट एंड ही विल बी सेइंग कि मैं इस सब ट्री के लिए कॉल करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए कॉल करना चाहता हूँ, राइट. इन दैट वे एट द एंड एवरीथिंग विल बिकम नल, राइट. सो दिस इज अ नल. और कुछ है नहीं, इसका मतलब नल. लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू नल, राइट इज आल्सो पॉइंटिंग टू नल. सो आई जस्ट राइट अ बेस केस कि इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, बस रिटर्न हो जाओ यहाँ से, बस भागो. दिस इज द बेस केस मैन. गाइस लाइक आई विल क्लियर इट मोर, ठीक है. तुम लोग के लिए मैं और क्लियर कर दूंगा ये चीज, ठीक है. अब देखो, अब ये फाइनल मतलब ये फाइनली बता रहा हूँ, ठीक है. यू गाइस विल अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है. अब देखो, लेट मी जस्ट erase this thing so that I'll be having more space, ठीक है. So let's assume this is line number A, this is line number B, this is line number C, this is line number D. Now let me tell you how this is working. तुम पूछोगे, you will be calling this function pre-order, ठीक है. ये pre-order है, समझ लो pre-order है. And this is being called with the value 1 के साथ कॉल किया है ना, ठीक है. तो क्या होगा, तो A चेक होगा, you will be checking A. तो चल कंसोल आउटपुट में देखते हैं. A रूट इज नॉट नल, सो कुछ नहीं होगा. फिर B पे आएगा, ठीक है. A हो गया, B हो गया, B पे प्रिंट होने वाला है, राइट. दिस वैल्यू विल बी प्रिंटेड, 1 विल बी प्रिंटेड, ठीक है. उसके बाद C पे आओ, देन यू विल फाइंड दैट द सेम फंक्शन इज कॉल्ड विद द रूट डॉट लेफ्ट. सो ये फंक्शन पूरा पॉज हो जाएगा इन द रिकर्सिव स्टैक, इफ यू नो कि ये फंक्शन पूरा पॉज हो जाएगा. एंड दिस विल कॉल अनदर फंक्शन दैट इज प्री ऑर्डर ऑफ 2, क्योंकि लेफ्ट है ना, रूट डॉट लेफ्ट यही तो है. और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा. इट्स लाइक इन द पॉज स्टेट में अभी पॉज हो गया है, गाइस, राइट. तो अब देखो, यू हैव कॉल्ड इट फॉर 2 अगेन. ए में इट विल बी नथिंग, ठीक है. बी में यू विल बी सीइंग दैट कि इट शुड प्रिंट दिस वैल्यू, सो 2 विल बी प्रिंटेड. अच्छा. एंड देन सी, अगेन सी विल बी कॉलिंग फॉर another value that is pre-order of 4, right. Even this guy is paused, okay. They are stored in the recursive stack, like this guy is also called with the value 4, okay. अब 4 देखो यार, 4 again B पे आएगा, print होगा 4, right. Now C पे it will be calling a pre-order with null value because इसका root dot left is null, correct. तो null value के साथ कॉल किया. So what will happen? It will return A पे ही return हो जाएगा. तो A पे ही you will be reaching here. Then इसका D value पे आएगा, right? इसका 4 का D पे. Even D is also null. So again pre-order of null will be called. Again it will be returned. ठीक है? So पूरा खत्म हो गया, right? So you will return back again to this position. Right? Now line number D will be called. Just see this. Line number D will be called with a pre-order of 5. So this is destroyed completely now, right? So now you're calling with pre-order 5, right? Again A, B में print हो जाएगा. And in the C will be calling for null, D will be calling for null, and nothing happens, you will come here. आ गया यहाँ पे, ठीक है. And it is D, right? So D is also null. So you'll again return back here at this position C. Now it is D again, right? So now you can see that root हो गया, root dot left हो गया, and then at the value D again another function is called, okay. When this is deleted, now this is also deleted. Now pre-order is been called with the value 5, sorry, with the value 3, I'm sorry, with the value 3, that is root dot right, है ना. This guy will be calling, this guy will be printed, and he'll be calling 2 nulls, and he'll come back, and then he'll come back here. Don't you think it worked, guys? And then this will also will rest in peace. So this is exact recursion calls that are happening, ठीक है. Actual recursion calls है, मतलब like this guy will be paused
till ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये सब पूरा कंप्लीट होके जब वापस आएगा तब भी ये चलेगा, एंड ये चलने के बाद लाइक दिस गाय विल बी पॉज्ड बाय द टाइम दिस गाय विल बी कंप्लीटेड, करेक्ट? सोचो यार इसके बारे में एक बार, सोचो ध्यान से, हाउ दिस इज वर्किंग, है ना? तो यहाँ पे आया, सी खत्म हो, फिर डी विल बी कॉल्ड, दैट इज द राइट इनपुट। तो मैं ऊपर ऊपर से कोड कैसे लिखूंगा कि मैं सोचूंगा ये बंदा काम कर रहा है, बस रूट डॉट लेफ्ट होके आ जाएगा। आई जस्ट नीड टू अरेंज देम इन द राइट ऑर्डर सो दैट प्री ऑर्डर ही हो पाएगा। उसके बाद बिकॉज ऑफ द वे यू अरेंज दिस स्टेप विल हैपन सो मेनी टाइम्स एंड यू विल बी रीचिंग द बेस केस दैट एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, करेक्ट? Right? So recursion, yeah, like tree is very recursive is because कि like I'm not saying कि ये same मिलेगा तुम्हें, same मिलेगा तो अलग बात है, but I'm saying कि if you look at its left subtree, it is also a tree, right? All the properties that this guy has, it has the same properties, and that is the reason why it is called a recursion. ठीक है, like it's a recursive, like recursive properties होंगे. If you can't understand recursion, you can never do any problem of that trees. ठीक है, सब recursion पे. Let me do it. Let me code it down. एक बार कोड करने दो तो शायद तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा, राइट? लेट मी जस्ट ओपन दिस। सो देखो यार, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? These guys are kind of want me to return a list of integers. It is a little different, है ना? List of integers मांग रहा है, करेक्ट guys? ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है? आई विल बी यूजिंग अ हेल्पर फंक्शन, हाँ, ठीक है? आई विल बी यूजिंग अ हेल्पर फंक्शन। सो बट फॉर फर्स्ट let me just create a integer ka answer which I'm going to return. I explained you this thing ki how I'll be creating an array list and how an array list will work, right? And array list kaam kar gaya. Now let me just call a pre-order and let me pass the root, okay? Not only root but also I will pass the answer, because in that answer only I'll be getting the values, right? So this is my question, ठीक? देखो, I'll be passing the pre-order, ठीक है? And then in that pre-order, like in that function, in the answers mein you'll be getting all the values, okay? So let me write that pre-order. So instead of there we are just printing it, right? So that code you can use it in our portal, but yahan pe you'll be returning these things, right? So you'll be returning that. Just a second, let me just see. Let me just write void pre-order, and this guy will be taking a tree node. See guys, another thing, tree node is already defined. देखो, ट्री नोड इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है? एक वैल्यू है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एंड दीज आर कंस्ट्रक्टर्स. ये विदाउट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, एंड दिस इज थ्री आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट? सो वी वोंट बी यूजिंग दिस मच, ठीक है? बट लाइक इंटरनली देयर इज अ ट्री प्रेजेंट व्हिच यू आर गोइंग टू यूज, राइट? एंड you on which you are just supposed to make the pre-order traversal. बस इतना ही है. That is the question. Are you guys getting it? मतलब ट्री ऑलरेडी दे दिया हमको, रूट दिया, बस आपको आंसर देना है बस. या यू कैन यूज लिंक लिस्ट एज वेल. एरे लिस्ट यूज कर सकते हो या लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हो. दो लिस्ट है ना. So this guy will be taking a root and then this guy will be taking a list of integers, that is answer. You can name it anything. Now the same logic, if root equals to null, that is the first point. तुम कुछ नहीं करोगे, आगे जाओगे. You'll just return from that function. You'll just completely destroy that function, right? अगर pre-order है ना, तो पहले I need to put the root value into the answer, right? So I should not be putting the root value. I need to put a root dot value into the answer. So I'll be just doing that. Root answer dot add root dot value. Do you guys agree with this statement? Yes, I'm just putting it inside this, right? So if you use objects, okay, it is like you're passing its reference, right? You're making the change to this array only because you passed the reference. I mean reference variable, correct?
do the same thing. Let me continue. Now the same thing. Now I'll be calling pre-order again with root dot left and with the same answer. The same thing, pre-order, root dot right, and then the answer. Bas ho gaya. This is the code. I can write written or I can skip that thing as well. Don't you think this will work, guys? Now एक अच्छा question पूछने वाला हूँ तुम लोग पहले. Just be ready. If you guys are saying that you understood it, you guys should be asking for me. ठीक है, line number 20 समझ नहीं आ रहा. See, line number 20 में, ठीक है, in the PPT I just made root dot SOP, मतलब root dot system dot out dot println root dot value. I'm printing that value. यहाँ पे I need to put it inside a link into a list of values, and I need to return that list. ठीक है, I should not be printing it. ठीक है, तो how do you put a value inside a list? You'll be doing like उसका variable का नाम, list का नाम, dot add ना, right? You are adding root dot value inside the list. That is what we are doing in this particular statement. अनिकेत समझ में आया? ये लिस्ट में ऐड करना है ना, like you're adding this value into this list, है ना? Okay, I think Bharat is ready. Bharat, the question is to you. What is the time complexity of this approach? Can you tell me what is the time complexity? It worked, right? लोग 2 पर n बोल रहा है, लोग big of n बोल रहा है. एक बार सोच समझ के हो रहा है यार, हमेशा ट्री होते ही 2 पर n नहीं हो जाता, ठीक है? डेप्थ बोल रहा है 22 और 21 का एक्सचेंज करोगे तो उल्टा प्रिंट होगा, तब इन दैट केस NLR की जगह NRL हो जाएगा, राइट? व्हिच इज नॉट आई वाटर. दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर, नॉट दिस, राइट? तो गलत हो जाएगा आंसर. Okay guys, let me tell you. Correct. So what are we doing here? Here basically we are just going to every node once and printing it. Correct. एक बार सोचो, you are at this position, you printed it, then you went here, you printed it, then you went here, then you printed it, then you came back from this recursion call, and then you went here and printed it, and then you destroyed all this thing, and then you went here and printed it, right? So you are just basically moving to each node one time. It's not exponential. Exponential तब होता है जब you are doing something repetitively, right? So यहाँ पे I'm printing this thing, right? I'm printing this thing. I'm going to left internally. I'm printing this thing, and then I'm going to left internally, and then printing this thing. उसके बाद I'm just closing that thing, ठीक है? I'm just closing that left वाला value. उसके बाद right को print कर रहा हूँ मैं. उसके बाद ये पूरा left खत्म हो जाएगा. उसके बाद right को print कर रहा हूँ. In that way I'm doing. Do you guys agree? Right? So the time complexity is big of n. Big of n लग रहा है because every time I'm just going on at one position and then I'm printing. It's not exponential. It's not the height. ठीक है? एक बार ध्यान से इस डायग्राम को पढ़ोगे, then you'll be understanding why. Next question. Again to Bharat. What is the space complexity? सोच समझ के आंसर दो. Space complexity. नहीं. See, it is not big of n. Space complexity is not constant. It is not constant because even though you're not using any array, you are using recursion, right? Recursion takes up an internal stack inside it. Correct. So this guy at max, what is the height of stack? सोचो, like stack में सब values एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई. सोचो यहाँ पे 1 आया, 2 कॉल हुआ, 4 कॉल हुआ, उसके बाद that is the maximum. उसके बाद 5, like this got removed and then 5 got inserted.
and then 5 got removed, 2 got removed, 1 is here, and again 3 is got removed. अगर समझ लो मुझे एक और वैल्यू है यहाँ पे बहुत लंबा है, ठीक है, that will be the maximum size. Don't you guys agree? That is nothing but height. See, you should be considering कि हमारे स्टैक में, हमारे जो स्टैक है, ये जो स्टैक है इसमें 1 और एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है, हमारे जो स्टैक है इसमें देखो, लाइक दिस इज माय ट्री राइट, 4 है यहाँ पे, 5 है, लाइक 1 आती है पहले, ठीक है, 1 विल बी कॉलिंग 2, 2 विल बी कॉलिंग 4, ठीक है, फिर क्या होता है, 4 विल बी कॉलिंग नल, एंड मतलब 4 विल बी कॉलिंग अ फंक्शन दैट इज नल एंड इट विल बी रिटर्न, ठीक है, तो नल भी एक ऐड कर सकते हो, सो 4 विल बी पॉप्ड ऑफ एंड देन 5 विल बी कॉल्ड, ठीक है, तो 5 will be, after 5 is done, ठीक है, 2 will also be popped off and then 3 comes into the picture, right? At any point 5 जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते स्टैक में, the maximum height stack can reach is the depth, is the height of the tree. क्यों? क्योंकि you're doing DFS, depth first search, पूरा डेप्थ जाओगे फिर बाहर आओगे, पूरा डेप्थ जाओगे फिर बाहर आओगे, राइट? तो you can just see, अगर एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिया 5, then what is going to happen? Then 4 के जगह like 5 है, right? So 4 will be calling 6 now, right? At the max 4 will be the height of the stack. Start out with other stacks as well. एक बार सोचो ये सब, ये इनके बारे में. Guys, अभी भी कोई है जो आर्ग्यू करना चाहता है मेरे साथ कि नहीं वो एंड होने वाला है? What is the maximum height the stack can be there? What are the maximum number of elements a stack can possess at any point of time? That is nothing but the पूरा ही उसका height कितना, वही तो maximum हो सकता है, right? क्योंकि in that way, like from coming from here till here, ठीक है, only then only you can be like, that will be the maximum ways, maximum stages, ठीक है, where your value will be paused, right? Correct? Maximum depth क्या होता है? Height होता है. Do you guys agree? So it is nothing but big of h. अगर h n है, if h is equals to n, ये कब होने वाला guys? When tree is in this form. Do you guys agree? या ऐसा हो, degenerate trees बोलते हैं ना इसको. So you can see that this is a tree which is having height equals to n. Correct? So such trees are called degenerate trees. And अगर एक ही तरफ है पूरा, तब उसको they are called skewed trees. ठीक है, I told you about this thing. So these guys are the guys who are going to make the space big of n. Correct? Is this making sense, guys? Okay, it's enough. काफी सारे नए चीजें सीख लिया हमने, ट्रैवर्सल सीख लिया. तुम लोग पोस्ट का थोड़ा ट्राई करो, ठीक है? इट्स ग्रेट, इट्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ यार, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ तो कभी था ही नहीं अब तक, ठीक है? तो आई रियली लाइक दैट थिंग. ग्रेट मैन, ग्रेट डेडिकेशन यू गाइस आर शोइंग, ठीक है, अच्छा लगा देखकर, ठीक है? या ग्रेट. अरे 119 मतलब लास्ट तक रहने वाले यार, लास्ट तक तो रहते नहीं है, 80 और 90 70 होता है लास्ट तक टॉपिक, है ना? लास्ट तक स्ट्रेंथ, बट इट वाज ग्रेट, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है ना तो बोरिंग नहीं लगेगा. ये भी थोड़ा कर लो, बोरिंग लगेगा बट ठीक है. ग्रेट मैन, नाइस टू सी यू गाइस. और कुछ नहीं पढ़ाने वाला, यू कैन लीव द क्लास, ठीक है? आई विल टॉक अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस आफ्टर वी डू द, मतलब दिवाली ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि यू गाइस नीड लॉट ऑफ theory on trees and bit manipulation to understand my question, ठीक है? तो गुड नाइट फॉर टुडे. दिवाली ब्रेक विल सी फ्रॉम 24 से देंगे, देखते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें पढ़ाना बाकी है, थॉट और भी बहुत पढ़ाऊंगा. मैंने सोचा था कि डाउट सेशंस भी करेंगे, राइट? ठीक है, तो विल सी. We learned lot of things today, सच बताऊं तो. We learned about linked list, है ना?
We learned about class creation, we learned about traversals, we learned about recursion as well. है कि नहीं? तो great, you guys can leave. हाँ, ट्री बहुत फेमस है अमेजोन का, बहुत फेमस है. मतलब ट्री मतलब हर क्वेश्चन ट्री से होता है उनका, तो ट्रीज अच्छी तरह से करो, ठीक है. I'll tell you, ठीक है, डोंट वरी. मैं लाइक आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, कितना समय में उतना करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है. सो फॉर नाउ राइट द रिकर्सिव फंक्शन फॉर इन ऑर्डर एंड फॉर पोस्ट ऑर्डर एज वेल, ठीक है. सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है. ट्रीज रियल लाइफ में बहुत काम आती है ब्रो, ट्रीज से बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. Like I told you, right? Did I tell you about Amazon का जो algorithm है on how to find the time it will take for the delivery box to come to your house, right? So we'll see. ठीक है, चलो man, good night. Sir, array list, linked list syntax need to be learned for the collection. Yeah, एक बार कर लो, ठीक है. I already thought that thing. Array list और linked list का ज्यादा कुछ है नहीं, एक लिंक भी भेज दिया उसमें. So I'll paste this links guys, ठीक है. Thanks for attending. We'll see you tomorrow.